a Man City supporter and Nathan Manchester United supporter. तो फॉर श्योर इट्स गोइंग टू बी फन. ये बात तो मैं आपको लिख के दे देता हूँ. और जो गेम वीक 1 था प्रीमियर लीग का, उसके बारे में बातचीत करेंगे और पॉसिबली एट द एंड उसकी एक 11 भी बनाएंगे कि अगर अगर यहीं पर सब खत्म हो जाता तो प्रीमियर लीग टीम ऑफ द सीजन क्या बन के आता. तो प्रणय भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. एनी टाइम भाई, एनी टाइम. और लास्ट टाइम भाई आई नो बेटर में आए थे एंड ही सर्टनली नोज बेटर बिकॉज एफपीएल में भाई ने 70+ पॉइंट्स क्लॉक करे हैं. तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट. इट्स अ गुड स्टार्ट. नॉट ओवर थिंकिंग दिस टाइम. बस भगवान की कृपा है. हाँ, ओवर थिंकिंग कर दी ना, फिर भी कर दी, फिर भी ओवर थिंकिंग. वो गैब्रियल ह्यूजूस भाई को हाँ, कैप्टन. ओवर थिंकिंग कर दी भाई, फिर भी. आपकी टीम में गैब्रियल ह्यूजूस भी है, सलाह भी है और हालैंड भी है. हाँ. काफ़ी पैसा इसमें ही चला गया. और नेथन भाई हमेशा हमारा साथ देने के लिए थैंक यू वेरी मच. पहले लेट्स स्टार्ट ऑन अ गुड नोट. लेट्स टॉक अबाउट द टीम दैट वन. प्रणय भाई, योर call on the Haaland day, the Haaland performance, next level start to the season for Haaland. हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स यार, वो तो वी ऑल सॉ इट कमिंग. ठीक है, जितना भी चाहे उस लोगों ने बोला भाई प्री सीजन में ये, प्री सीजन में वो, वी ऑल नो इट. वी ऑल ठीक है, 2-3 मोमेंट्स को लेके अगर हम हटा दें, द मोमेंट ही वन द पेनल्टी, ही स्टेप्ड अप, टुक द बॉल. मेरे को तो लग रहा था केडी भी होगा पेंस में, बट आई थिंक ही नीडेड दैट कॉन्फिडेंस. एंड पेनल्टी भी बहुत शार्पली बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, स्ट्रेट इनटू द बॉक्स. तो मतलब कॉन्फिडेंस तो है ही बंदे में. एंड आई थिंक या मैन, लाइक आई हैव ऑलवेज, इवन सीजन के उस पे भी मैंने बोला था, आई थिंक हालैंड इज गोना स्कोर प्रॉब्ली 25+ गोल्स दिस सीजन फॉर श्योर. मतलब तो आई थिंक गोल्डन बूट में तो आई डोंट थिंक सो एनीवन वुड बी near to them. Of course there are Kane and Darwin Núñez, Salah, but I think Haaland is Haaland, bro. Like that's why we got him to score goals. हाँ, मतलब obviously people were all over Haaland after that Community Shield game and they were like Haaland ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा. Most of the people, मतलब चैट पे भी मैं देखता था, लोग कहते कि bro देख लेना, at the end it will be Alvarez who will score more goals. But भाई यू कैनॉट बीट हार्ड वर्क प्लस टैलेंट दैट हालैंड हैज गॉट. मतलब ऑब्वियसली द रन, जो रन बना रहा था भाई हमारा, उसने कहा भी कि शिट यार हैट्रिक हो जाती, गुंडगन के उसमें भाग लेता. तो मतलब हाँ, थैंक्स टू हालैंड फॉर गिविंग सच नेक्स्ट लेवल प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एज वेल. भाई मेरे को तो बहुत मज़ा आता है. मतलब यार नेथन ब्रो, मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो क्या करें. मतलब हमने सारी बातें कल कर ही ली थी, बट फिर भी मतलब गुड. डू यू सी मतलब कि कल ऐसा मैच हुआ और उसके बाद अब एड्रियन रैबियट से लिंक्स आ रहे हैं, तो डू यू सी इट्स एज दिस एज अ गुड स्टेप टूवर्ड्स चेंज? No. नो. यस भाई, मतलब बिल्कुल सही बात है. A मतलब temperamental Frenchman is not exactly what I would like in a team full of people who have giant egos as well as uncertainty, inconsistency, and not to mention dressing room drama. Like they're a bunch of Barbie dolls sitting in their fancy cars and hanging out on social media. So we don't need one more of those. We need can actually someone who basically we need a Roy Keane who would happily walk up to someone and headbutt them if they acted too smart. That's what we need. Ask Alfinga Haaland, he knows about it. हाँ, मतलब भाई एल्फिंग हालैंड भैया भी काफ़ी खुश थे कल दबा हाँ, के. कल पार्टी कल पार्टी थे. कल हालैंड के घर पे जो पार्टी हुई है, नोबडी कैन इवन इमेजिन. भाई प्रणय भाई, आपको क्या लगता है कि मतलब एवरी मैनेजर, मैं और नेथन कल ये बात करते हैं कि एवरी मैनेजर इज कमिंग एंड प्लेइंग मैकफ्रेड, तो मतलब आप मैकफ्रेड को तो गाली दे नहीं सकते हो एज सिंपल एज दैट, बिकॉज वो ये थोड़ी बोल रहे हैं कि भाई मुझे चुन ही चुन. ऑब्वियसली देर आर नो better players in the team than McFred, इसलिए they are always on the line in the lineup. What's your call? No, no, hold on. Before you answer, Pranay, sorry to interrupt, but it's not about better players. It is about we have midfielders and they still don't pick them. That it's a very key point. If you think a midfield duo is bad, you change at least one of them. They change neither. You have to keep that in mind. Because every time the argument after every match is why are they not broken up? So broken up doesn't mean both of them don't have to play, but they're not even broken up.
So sorry, Pranay, please continue. I just wanted to add that. I mean, you already answered, man. मेरे को तो इसमें like again, it's a united question, तो I'm happily like happy कि आपने answer कर दिया. And I think it's the same thing, yeah. I think they have few players now. They're not trying out, and I would say McTominay was absolutely garbage, man, yesterday. And like kudos to Ericsson for whatever the performance that he pulled off, man. Like Ericsson was, I think, the best player from the game yesterday. Didn't I didn't really expect कि first game के हिसाब से, like of course we all know that he has a sheer quality. He has done it before in Spurs as well in the Premier League. Brentford वाले maybe like he had few moments. I was still skeptical कि he will start, or like he's gonna be at the very same level. But yeah, man, I think completely opposite to what McFred played. I think Ericsson was the player that we all should, I think, watch out. And yeah, let's see. भाई मतलब श्रेय ओबराय भाई, अगर आप अर्नाटोविच के बारे में बात कर रहे हो, किसी ने भी रिकमेंड किया हो, इट्स नॉट अ सोल्यूशन एट ऑल भाई. मेरे ख्याल से ही इज़ नॉट एट ऑल अ सोल्यूशन. दैट्स फॉर श्योर. एंड मतलब गैरी नेवल और रॉय कीन ने अपने इंटरव्यू में बोला भी है कि जितने भी लोग बैठे हैं ये स्काउटिंग करने के लिए और ट्रांसफ़र मार्केट की जिनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर श्योर दे आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब. मतलब आप देख लो, अगर लास्ट में अगर आप देखो स्ट्राइकर की बात करो तो दे हैव गॉन फॉर कवानी, इब्राहिमोविच, इगालो एंड वन मोर गाय. सो दे आर गोइंग फॉर, मतलब दीज वर डेस्परेट साइनिंग, नॉट कि भाई उनको चाहिए था. उन्होंने बैकअप में मतलब नाम, मतलब इब्राहिमोविच चलो ठीक है, इट्स अ बिग नेम, बट उसके अलावा दीज ऑल वर डेस्परेट साइनिंग. ऐसे स्ट्राइकर लेके आए जो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 2 साल आपको दे सकते हैं. उसके बाद अगर आप देखो नोबडी, मतलब अगर आप कवानी की बात करो, ही इज स्टिल लुकिंग फॉर अ क्लब. इगालो का तो आई डोंट इवन नो. फिर फेल्काओ भी लेके I think Cavani is going to ला लीगा के लिए. Valencia, हाँ, Valencia ला or लीगा की Sevilla, one of them. ला लीगा की बातचीत चल रही है. उसको वैसे उसके होम टाउन की तरफ से कॉल आया था, बट उसने कहा कि नहीं, आई वांट टू बी इन चैम्पियंस लीग प्लेइंग टीम फॉर से. ठीक है, तो फिर वो रुक गया. और उसके बाद फेल्काओ भी लिया था, हु इज़ राइट नाउ प्लेइंग इन राय वालेकानो. तो ऑल दीज आर डेस्परेट स्ट्राइकर साइनिंग एंड नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और दोस्तों अगर अब बात करें लिया, इस बार पीएसजी को कौन निकालेगा यूसीएल से? मैनचेस्टर सिटी. आई एम काउंटिंग ऑन यू गाइस. आई होप देयर इज अ ऑयल डार्बी. PSG तो मतलब I don't think they are in. अभी भी राय था हमने उनको तो रिसेंटली, मतलब हाँ. तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि यार मतलब PSG से इतना डर है. मेन टीम तो एक ही टीम है भाई जिससे डर लगता है जिससे हारे. तो हाँ That's Chelsea. That's यस चेल्सी, Chelsea. इंडीड That's दैट Chelsea. चेल्सी. Yes, दो we lost the मिनट final against Chelsea. 2 So मिनट 2 I don't know what you were thinking, man. सेम. मेरे तुम को जो भी सोच रहे थे वो गलत सोच रहे थे. मेरे को तुम्हारी सोच गलत है. मेरे को So नहीं, मेरे को Chelsea is the बिल्कुल भी नहीं team लगा that कि we have आप to beat. हाँ. रियल मैड्रिड की बात करते हो. हमसे क्या Yes. मतलब हमसे क्या डरना भाई? व्हाट इज दिस? वी आर स्टिल लुकिंग फॉर अ बैकअप स्ट्राइकर. Yeah. एंड जो भी है, मतलब पीएसजी के वैसे यार देखो, बात करें अगर थोड़ी सी पीएसजी की बात कर लेते हैं, दे आर लूइस Ocampos OP in the chat, boys. That guy was linked to Real Madrid but it didn't come. But that is the same guy who is behind Monaco's scouting success. Monaco ने जो ये Fabinho, Bernardo Silva और ये इतने सारे जो उनकी टीम थी जिसने मैन सिटी को हराया था, सॉरी प्रणय भैया, उसका इंचार्ज भी लुइस Ocampos था. Mbappe. हाँ, एम्बापे ऑब्वियसली उसका इंचार्ज. सबसे मेन का तो नाम लिया ही हाँ, नहीं तूने sorry. यार. मैं यहाँ पर नहीं लेता अब उसका नाम, हो गया अच्छा. वो रिश्ता खत्म हो चुका है भैया. एम्पेपाल. एम्पेपाल, एम्पापेड, whosoever that guy is, आई डोंट नो. फिर उसके बाद दिल्ली भी गया, वहाँ पर भी उसने अगर किसी ने तो कमान संभाली तो दैट इज लुइस Ocampos. और मतलब आप देख सकते हो भाई, फेबियन रूई आ रहा है, रेनाटो सैंचेज, विटीनिया, एकिटेके भी उन सब ने साइन कर लिया. हाँ, तो, एकिटेके भी. तो हाँ. मतलब साइलेंट एंड टॉप क्लास साइनिंग. मिडफील्ड की जब हम बात करते थे कि भाई अटैक तो बहुत तगड़ा है, लेकिन मिडफील्ड में वो नेक्स्ट लेवल बंदे नहीं दिखते भाई. आप देख सकते हो अब विटीनिया है, रेनाटो सैंचेज है, और भी उन्होंने एक तो उन्होंने अपना फुल बैक परमानेंट कर लिया था, पोर्चुगीज़. तो ये सारी साइनिंग उन्होंने करी है एंड दैट लुक्स नेक्स्ट लेवल. और बातें जो चल रही थी दोस्तों, आपने देखा होगा नेमार की ट्रांसफर की. आफ्टर द 2 गेम्स ही हैज शोन क्वालिटी एंड गेल्टियर. टॉक अबाउट मेसी ओवरहेड किक भाई, सुपर भाई, सुपर प्रणय भाई, सुपर. एनीथिंग? या मैन, मतलब अच्छी थी और क्या. लाइक आई आल्सो पोस्टेड, मतलब बहुत ही बढ़िया थी.
ठीक है, सम पीपल माइट कॉल इट जो भी ट्रोल्स वगैरह हैं, बट ठीक है, आई सी एन एब्सोल्यूट गुड गोल यार, हाँ मतलब ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया गोल था. द सो फर्स्ट टच या, वाज सुपर्ब और उसके बाद द अमेजिंगली फिनिश फर्स्ट टच, फिर फ्लिक, फिर उसके बाद ओवरहेड, मतलब बाइसिकल, अमेजिंग. अमेजिंग भाई. मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड की मैं दाद देता हूँ. ओपिनियन बॉल, ऑन और सबसे आई थिंक इट आल्सो ओवरशैडोड द बॉल व्हिच वाज गिवन टू हिम. आई थिंक मतलब वो, ठीक है, द क्वालिटी एंड द फिनिश वाज ऑफ कोर्स देयर, बट उतनी ही प्यारी बॉल, मतलब इन टर्म्स ऑफ द गेम, बहुत ही बढ़िया, लाइक दोनों दोनों बहुत ही बढ़िया. और मैं वही कह रहा था कि भाई पोटैटो भाई नोटोविच की बात कर ली. थोड़े से पहले चले जाओ. दे विल साइन अ सेंटर बैक एंड स्ट्राइकर हु विल बी द बेस्ट फ्रॉम देम अकॉर्डिंग टू यू. मतलब अच्छा, मतलब अभी भी रहता है. आवेस क्रीनियर की बातचीत चल रही है उनसे. तो लेट्स स्टिक टू प्रीमियर लीग. नेथन ब्रो, फुलहैम इज द टीम दैट एवरी शुड बी स्केयर्ड, मतलब रेडी, बी रेडी फॉर और बी स्केयर्ड ऑफ. बिकॉज मतलब जब हमने प्रिडिक्शंस करी थी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर लाइक कि फुलहैम इज गोइंग टू गेट रेलीगेटेड. बट द वे दे हैव प्लेड द फर्स्ट गेम, द इंटेंसिटी दैट दे शोड, एंड इट वाज अगेंस्ट लिवरपूल. मतलब नॉट अ स्मॉल टीम और not any mid-table team. It was against Liverpool up there. Yeah, yeah. Mitrovic goes with the golden boot at the end, maybe. Nathan. Yeah, well, last season Liverpool went 4-5 with Leeds. So just to be clear, that doesn't really mean anything, if we're being very honest. Because the first game of the season, Bournemouth kind of thrashed Aston Villa. Aston Villa spent more money than 14 of the Premier League teams this season. I think it's 14. I think it's 14. 14 or 15. Uh, they're still getting relegated. So everyone should just calm down about that. That being said, I think Mitrovic is going to do better this season, which means they might have a fighting chance as compared to last season, where even though they had Scott Parker and they mounted a late comeback to try and scratch their way out of, I don't think anything is going to change. That being said, fantastic performance by Fulham. No fear. That's how you should. That's how you should play. This is how English football always used to be played, no matter how bad the team is. And it is a perfect example of the championship mindset, which I've been saying on your channel many times. Top 5 league in the world. People laugh at it, but it's top 5 league in the world. I'd still say that. No, matlab, obviously the No, quality the only difference is nobody just knows the players. But nahi, when it comes to the toughest league in the world, it's not a question even for me. They play the most games of any of the top, I don't know, 10 teams, Yeah, 10 countries. They play FA Cups. They have to start the Carabao Cup at a lower at the stage. very So bottom, yeah, from it the is very bottom. intense can be, those leagues. The Yeah. Championship, League One, they're intense. But Yes. League One is the third division of England, not the French League. We know what the French League is. Thank you. Just for clarification. Justin FC Barcelona is preparing an official offer for Bernardo Silva, quoted by Let's move on, please. Let's move on. Fabrizio Let's Romano. move on. Thank you. Oh my God, that is something. That is obviously. But very big- Fabrizio Romano also said on the United stand that if they are buying Barcelona, Bernardo But- Silva, Barcelona have to offload Frankie De Jong. So अभी तक it's ऐसा not like it's And- technically you don't really bolster your team. You'll actually lose one for the other. So नहीं. और अभी ये बात भी मैंने ब्लीचर्स रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि बार्सिलोना ने फ्रैंकी डियोंग को बोला है कि आप अपने वापस जो पुरानी आपकी जो आप नए जब साइन डील है होते वही, हाँ, तो वही उसी करनी कॉन्ट्रैक्ट पड़ेगी. पे आ जाओ. बिकॉज जो उसमें आप कुछ फ्रॉड्स थे, कुछ क्रिमिनल फ्रॉड के लिए, एक्ट्स हाँ, हैं, क्रिमिनल उसमें एक्ट्स हैं, हाँ, हाँ. मैंने भी तो वही पढ़ा अभी. तो वापस आ जाओ आप अपने मतलब very convenient क्या that the बात है. lawyers found it out now, right? हाँ भाई, मतलब मैं तो वही कह रहा Pretty हूँ, convenient. प्रिटी कन्वीनियंट, दैट्स फॉर श्योर. और दूसरी बात ये है कि मतलब अब ऐसे तो कॉन्ट्रैक्ट आपको वापस करना ही पड़ेगा. मतलब इफ देयर वर क्रिमिनल एक्ट्स अराउंड दैट. एंड Bertemo OP in the chat, boys, he did a fantabulous job when he was at Bus. But प्रणय भाई, आपकी क्या कहना है फुलहैम पे? अर्नाटोविच मतलब probably the first player to dribble past Van Dijk and concede and force him to Mitrovic, sorry. अर्नाटो कह रहा हूँ, मित्रोविच. अभी ऑलरेडी तेरा हो गया यूनाइटेड पे नहीं, कि नहीं. आ रहा है ना वो यूनाइटेड, ऐसा वो बोल हाँ, रहे ऐसे हैं. मतलब ऐसे बातचीत चल रही है. मैं अगर ही इज अ गुड प्लेयर बट ही इज टू ओल्ड यार. आई थिंक हाँ, अभी 33 हो ये चुका तो है. टाइम, हाँ, ये टाइम थोड़ी ना था यार आने का.
तो बहुत पहले आना चाहिए था अगर आना चाहिए था, बट हाँ एनीवेज आई यूज्ड टू लाइक दैट प्लेयर व्हेन ही यूज्ड टू प्ले फॉर वेस्ट हाँ हैम, तब ही तो वाज अ गुड प्लेयर। बट या मैन मित्रोविच का अगर बात करें तो अगेन आई एम नॉट अ फैन। पिछले से पिछले सीजन काफ़ी स्कैम करा उसने मेरे साथ oh, FPL में, performed really poorly in FPL last to last season when Fulham were promoted, but I think this season under यार मैं मैनेजर का नाम भूल जाता हूँ फिल्म के, फुलम मैनेजर मैं Silva, बार बार, हाँ Marcus Silva. सिल्वा। सो सो उसके अंडर आई थिंक काफ़ी ही ज़्यादा शार्प लग रही है टीम यार इस सीज़न, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा शार्प लगी। आई थिंक दे fair to say they outplayed Liverpool यार, like they literally outplayed Liverpool. Though it was a draw, I somehow thought कि you know Fulham somehow deserved to win the game. But yeah यार मतलब Mitrovic is back, let's see. But again it's just one game, I'm not gonna judge him or take him in my team as well. When he does it in 3-4 games then we'll talk. हाँ मतलब ये तो बात बिल्कुल सच है, बट मतलब सिंपल सी बात है, आप भाई को लाइकली नहीं ले सकते, ये भाई ने बता हाँ दिया। हाँ 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 ये तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल मतलब जैसे लोग मजाक उड़ा रहे They're थे, playing एवरीबडी वाज। Fulham are playing Wolverhampton next game, so it'll be interesting match. दैट्स फॉर श्योर। It'll be मतलब interesting match. जितनी भी टीमों का लोगों ने नाम लिया रेलीगेट होने के लिए, वो दे समहाउ मैनेज टू विन। लीड्स ने भी हरा दिया 2-1, एंड आफ्टर मैच एंडेड दोनों मैनेजर्स के बीच में बढ़िया लड़ाई, मतलब रिफ्ट विफ्ट भी हुई, शाउटिंग आउट फक ऑफ एंड यू गो चल रहा था। बहुत जगह नई जगह ये बातें कर रहे थे वो लोग। जयंत भाई इस बार PSG लीग 1 में कितने टाइप ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेट करेगी? Literally don't know, bro. But a good comment for sure. But let's talk about a team that looked dangerous to me at least, and it was literally fun watching them. And मुझे ऐसा लगता है कि they might be the team that will score the most amount of goal this season. And I am talking about very hot Tottenham Hotspurs here. Pranay bhai, Oh. did you see the match? Tottenham Hotspurs versus Southampton. Pehla Ward-Prowse bhaiya, obviously the veteran of Southampton, scored the first goal, gave the points to his FPL owners. But उसके मेरे बाद पास है भाई वर्ड क्रॉस, क्या मेरे बात पास है, था। 9 9 पॉइंट, पॉइंट्स, 9 9 पॉइंट, पॉइंट्स। यस। या एक गोल और उसके बट मैंने मैंने हर जगह प्रेडिक्शन पे भी यही बोला था कि स्पर्स विल आर गोना स्कोर 4+ गोल्स, और वही हुआ। मैंने उस्मान भाई और 2-3 के चैनल पे बोला था कि स्पर्स का ही सीजन है भाई ये वाला, तो फॉर श्योर स्पर्स का सीजन है। 4 गोल का मैंने बोला था। आई प्रेडिक्टेड 4-0, बट ठीक है, आई एम हैप्पी वॉट प्राउस आल्सो स्कोर्ड क्योंकि मेरे को FPL में पॉइंट्स मिल गया। बट इन एनी केस FPL से दूर हट के बात करते हैं। आई थिंक स्पर्स अगेन मोस्ट सबसे ज़्यादा अगर खतरनाक टीम इस समय किसी भी मतलब द सरप्राइजिंग पैकेज यू नो फॉर एनी क्लब आउट देयर इज स्पर्स। आई थिंक स्पर्स को तो इस सीजन तो यार बिल्कुल लाइटली मत लेना, बिकॉज आई थिंक एंटोनियो कॉन्टे इज गोइंग फॉर इट, लाइक ही इज डेफिनेटली गोइंग फॉर इट ऑल आउट। तो देखा मैच में, देखा। तो यार उस मामले में तो लाइक आई मैं मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बट आई जस्ट रिपीट कि आई थिंक अगर एंटोनियो कॉन्टे एंड ऑफ द सीजन तक या जितनी आगे तक भी अगर स्पर्स जाती है, अगर वो रहता है, तो स्पर्स विल डेफिनेटली विन अ ट्रॉफी दिस सीजन फॉर श्योर। मतलब प्रणय भैया कहते हैं कि कब कॉम्पिटिशन्स कोई सीरियसली लेता है, नॉकआउट को नहीं लेता। तो अगर वो एक ट्रॉफी अगर प्रीमियर लीग निकली, मतलब जिसके चांसेस काफ़ी कम है ऑब्वियसली, हाँ बट अगर वो निकली तो मतलब कॉन्टे भैया जय जयकार है भाई। नेथन ब्रो, डिड यू सी द मैच? मतलब पहले तो वेरी सॉरी अगर आपने टॉटनहैम में सारे प्लेयर्स को छोड़ के हैरी केन लिया था, मतलब 4 गोल मारे लेकिन हैरी केन का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, विच इज़ अ वेरी अम्यूजिंग फैक्ट। बट नेथन भाई क्या लगता है, टॉटनहम I think टू हॉटस्पर्स? so. So before I answer the question, Pranay, did you do a Premier League predictions? या Where do you place Tottenham टॉटनहम at the end of the season? थर्ड, टॉप 4। थर्ड या फोर्थ? Did you pick a position or you just said top four? आई थिंक आई सेट ऑफ ऑन थर्ड, आई थिंक आई सेड थर्ड। Yeah. So my prediction was also third, but I had the caveat of saying I feel like two London teams are going to implode one way or the other. It seems like Chelsea with their very erratic transfer window. I mean, they'd only score a penalty, so it's not. I feel like Chelsea will be one of the teams that implode a little bit, and I think top four might be more open than people think, just simply because there's still 3 weeks. There's a या lot of business to be done. या
And also, injuries, everything considering. I think Tottenham will implode, and but I definitely think before they implode, they're going to be a problem for a lot of teams. That being said, they're going to play Chelsea, and I think Chelsea will be a very good litmus test because I think Chelsea, Arsenal, and Spurs are around the same area. They are all being expected to finish top four. And I think this outcome will be quite telling on what the season holds for both teams, actually. Even though it's only games in, you have to understand that if Chelsea actually can't make any more purchases by the time the season's done, that's the team they have. They have Kai Havertz with a terrible haircut as a false nine, and that's all they got. So it's Yeah. going to be very interesting to see what happens at the end of the season. But so far, so good. 4 goals. Unfortunately, I had Kane, even though I wanted Kulusevski. I wanted Kane because I wanted the differential, so that was disappointing Kane personally. is not However, differential, man. Come Kane on. is no, not. it was a differential compared to everyone taking Haaland because everyone's on the Haaland train, right? Fresh season, everyone's fresh, So it's a good idea. I'm not complaining or anything. But matlab, It's sad to see Son and Kane, but Kulusevski would have been a better idea personally. And apart from that, I was enjoying the game really because I didn't हाँ have any other players in the game, so I was मतलब enjoying it. And I have to say something, Ryan Sessegnon had a good game, very good game. but he's had plenty of bad games last season. So हाँ everyone, please but be very aware but of what happened. And it's only Southampton. Please never forget that. हाँ वो वाली बात Southampton बिल्कुल beat a सही lot है. of goals. बट और वही है कि बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है अगर आप सेसेनियन को ले रहे हो बिकॉज ऐसा कर दिया था एट द एंड आते आते क्या कहते हैं कॉन्टे ने वो सेसेनियन की जगह पेरिसिच ले आया था वहाँ पर डॉटी ले आया था. यू नेवर नो ही माइट स्टार्ट पेरिसिच. और सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ तो यही थी कि इतने सारे साइनिंग्स करने के बावजूद इट वाज द सेम ओल्ड क्या कहते हैं लाइनअप टॉटनहैम की एंड इट वाज ऑन फायर भाई. कुलसेस्की ऑन फायर. ही स्कोर्ड अ गोल. असिस्ट में जब से वो आया है ही इज ऑन कुल्लू तो टॉप ऑफ द भाई असिस्ट लिस्ट. ट्रू कुल्लू तो भाई मतलब नेक्स्ट And लेवल. Emerson Royal might still be sold. So they are going to have Doherty and Spence. And if anything happens to Doherty, they have कहाँ Spence. रॉयल कहाँ जा So रहा है रॉयल it को could तो आफ्टर दैट परफॉर्मेंस रॉयल को बेचना could इज be a problem. अ मिस्टेक मेरे Uh, ख्याल से. well, they still have three right backs, right? So it हाँ doesn't really make they sense. have Wing backs, but whatever, you however you want to but you call it. don't but you don't sell the best option मेरे ख्याल से. मतलब एमरसन रॉयल अंडर कॉन्टे लास्ट सीजन के भी एंड में ही वाज प्रीटी गुड और अभी हमने देखा मैच में वो बहुत ही तगड़ा Well, था. they can't sell Doherty because they spend way too much money on it. हाँ They ऑब्वियसली. sell Doherty. Daniel Levy is the kind of person that will try to get as much money as he can, which he will not get for Doherty. So Yeah. it seems like Royal will be the outgoing if they decide to बाबा follow through with बाबा और it. प्रणय भाई ने मेरे एफपीएल के लगा दिए लगा दिए. कौन बोला ये? लपुलगा मेसी 100. क्या बोला भाई? क्या? भाई क्या भाई ऐसी क्या गलती हो ओके. दोस्त. मैंने मित्रोविच लेने के लिए मना किया था एंड बाबा सेड दैट अगेन एंड दिस इज समथिंग दैट वी एडवाइज्ड. हम लोगों ने एडवाइस किया था एंड वी डिडंट पर्सनली डू. ओके. मैंने मित्रोविच लेने के लिए मना किया था बिकॉज ऑफ द आई थिंक 2021 सीजन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था मित्रोविच के साथ. So that is why I advise everyone to go against it. But I still stand it. मैंने आज डाला है उस चीज़ को. मैंने obviously सबको बोला था कि like personal again it's an advice. मानना ना मानना किसी उसके ऊपर है. But for example like I know at the end of the season there are far better options cheaper than Mitrovic. Like don't waste your money on Mitrovic. हेसुस जैसे प्लेयर्स हैं जो 8.59 मिलियन में आपको और ज़्यादा रिटर्न्स देंगे. देंगे ठीक for है. हेसुस ब्लैंक्ड एंटोनियो ब्लैंक बट दिस डजंट मीन कि मित्रोविच ने पहले गेम वीक में मार दिया है तो ही इज लाइक इफ यू वांट टू गो डू इट टेक इट. बट मतलब अगेन लाइक आई वुड स्टिल स्टैंड टू माय फैक्ट कि अभी मित्रोविच लेना लाइक आई एम नॉट सेइंग कि इट्स नॉट अभी लेना नहीं लेना. बट आई विल सी अगर 5-6 गेम वीक तक अगर इफ ही इज रियली इन अ गुड फॉर्म देन व्हाई नॉट. बट that's what. And Baba I think said ki to wait on Nunes. Again Nunes also scored but he didn't start the game. Nunes didn't start the game which Baba said कि you know थोड़ा सा वेट कर लेते हैं डार्विन नूनेस को. एंड लुइस डियास भी हम लोगों ने बोला था बट अगेन FPL इट्स ऑल अबाउट यार जो सामने दिखता है बस लोग उसी चीज को देखते हैं. बट लुइस डियास वाज far like he hit the post I think 2-3 times. He should have been on the score sheet. तो ठीक है यार there are ups and downs. There's nothing वो. And जो हम एडवाइस करते हैं
we try to follow that advice. It's not a hard and fast advice. आपको जो लगता है आप वो करो. आपको मित्रोविच रखना है, लोगों ने मैगवायर रखा हुआ था अपनी टीम में. That is their choice. We only help. We will give you an advice. जो मैं वही advice दूंगा जो मैं खुद follow करता हूँ. मैंने मित्रोविच नहीं लिया. तो तुम भी वही हो, हम भी वही हैं. ऐसा अगर मैं ये करता कि तुम मित्रोविच मत लो और मैंने मित्रोविच टीम में लिया होता, भाई that would have been a problem. एक बार नितिन ब्रो चेक करना, अभी भाई ने कहा BNY MGR ने कहा रेबियो डील डन, ही इज अ रेड नाउ. भाई इट्स मतलब भाई अभी उससे पहले क्वेश्चन था व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट रेबियो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, गुड साइनिंग और पैनिक साइनिंग. पैनिक ऑब्वियसली, कल हारे आज No. He's a good. No. He's a good. He's not. नहीं, He's मतलब- not a panic signing. you He's have not- you have he Fabian Ruiz in the apparently- market. You have Fabian Ruiz in the Appar- market. You have it. You have a better player in the market, but you are not going for him. Apparently, they wanted a midfielder after the Brighton game. Apparently, word came out that they want a midfielder irrespective of whatever De Jong wants to do. That is where this Adrian Rabiot. He is better Talk than has come from. McTominay for sure, bhai. Any day he's Listen, better dude. than Listen, McTominay. listen. Any day, any day. Remember what I told you. All of these people just say that these people come to the country, these people come to the club, and then they don't work for the shop. One thing you can't blame McTominay is they work for the shop. In last season, we saw better quality players that everyone insists are better than McTominay not work for the shirt. Keep that in mind. It's the revisionist history to blame McTominay and Fred for everything. At the end of the day, if you don't work hard, it doesn't matter how much talent you have. हाँ फुटबॉल Don't ever mistake that. Don't ever. It's foolish. नहीं वो The तो reason Rabiot went from PSG to Juve was but because he was a Nathan finicky bro, your player. personal opinion, is it a good signing according to you or panic If he signing? if he is the finicky player that he from the PSG time where he came to Juve, then no, because we already have attitudes among the team. What is another attitude? It's another liability. It's not a benefit to us. It's not about quality. If you can't perform on the pitch, it does not matter how much quality you have. Pogba went for a free. How many months is he missing? Where's the quality gone if he doesn't play? It doesn't matter. It will never matter. If he comes with a bad attitude because he doesn't want to leave Juve, but he won't get game time, so he wants to play. He comes, Eric Ten Hag says, no bullshit. He does bullshit, he's going to sit on the bench. Another liability. Rabiot Back to ex-City McTominay and Fred. Rabiot ex-City player again. अरे बहुत पहले यार. बहुत पहले. नहीं मतलब हाँ, I mean yeah. But it doesn't matter. We have Sancho. Yeah. It doesn't mean. हाँ भाई वो तो होता रहता है. वो तो होता रहता है. Man City got Peter Schmeichel way at the end of his time. It doesn't mean that doesn't mean anything anymore. भाई प्रणय भाई आपके FPL में पॉइंट कितने 77 73 ऐसे ही कुछ है ना. हाँ. ऐसे ही कुछ है यार. ल्यूक डियोंग ब्रो 70 ल्यूक डियोंग भाई के 78 और जितना प्रणय भाई ने बताया FPL के बारे में, इट विल बी क्रेजी टू हैव हिम विद सूरज कुमार ऑन आवर FPL क्लासेस फॉर श्योर. वन डे विल हैव हिम. मेरे को लेनी पड़ेंगे सूरज भाई से. नहीं सूरज भाई इज अ गीक, मैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा एवरी FPL. Suraj Bhai is also in the mud. A very हाँ very average, but obviously coaches don't play sometimes, तो मतलब he is playing but just for the sake of it. और दोस्तों मेरे को in long term I'll beat Suraj you is like back. anything, buddy. Suraj is back by the way. I was actually going to say in the end he's going to pick up, but yeah. हाँ obviously I only meant right now. ये मैराथन है, रेस नहीं, समझे मतलब वो वाला सीन. तेज नहीं ज्यादा भाग, ये मैराथन है रेस नहीं, समझा बात. दैट्स अ लाइन ऑफ रैप. बट नेवरदलेस यार टॉटनहम हॉटस्पर्स मतलब कॉन्टे का ओजी फुटबॉल चल रहा था. फुल बैक्स रन कर रहे थे प्यारे, बट जेनेपी ने जिस तरह से गेम स्टार्ट करा था मुझे लग रहा था कि आज तो वो काफ़ी लोगों को ख़त्म करेगा. एंड काइल वॉकर पीटर्स वाज आल्सो ऑन अ मिशन, बट एट द एंड मतलब कुलोसेस्की शो फिर शुरू हुआ. फिर सॉन मिस्ड मैनी चांसेस, वरना भाई वो आराम से 4 गोल से ज़्यादा मार सकते थे. इट वॉज ईजी पीजी गेम. दोस्तों मैं आपको चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू यू हॉटस्पर, चेल्सी और आर्सेनल में से मतलब उनका 1 2 3 क्या होगा एट द एंड ऑफ द सीजन ऑन द टेबल. क्या लगता है आपको प्रणय भाई, आपको क्या लगता है हु विल फिनिश एट द टॉप एट द एंड? विल इट बी आर्सेनल, टॉटनहम और चेल्सी में से कौन होगा आपका नंबर 1 2 और 3? सब बता दो. आई थिंक टॉप पे तो आई थिंक टॉटनहम ही फिनिश करेगी. Chelsea, Arsenal, I see mixed reaction, but I think Arsenal has a better squad right now अभी के लिए अगर. But again यार Spurs, Arsenal, Chelsea, that's what I
दैट्स Okay, व्हाट आई okay. स्टैंड फॉर. मतलब अगर कुछ और नहीं मिलता अभी चेल्सी को मार्केट में से और तो मतलब दे स्टिल आई थिंक पीपल आर सेइंग दैट देयर स्क्वाड इज कंप्लीट, यू नो, एवरीथिंग इज डन. आई स्टिल समहाउ फील कि उन्हें थोड़े से और ट्रांसफर्स अभी करने चाहिए. लाइक दे डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्राइकर. अभी टीमों का भी आ गया कंफर्म, यू नो, कंफर्म हो गया है. तो until unless they have that, I would still rate them low. Nitish Meena, Manchester City fan, is here and he's surely here to make some controversies. Nathan bhai, Oh, please don't, this please is don't react. fantastic. Please This is don't react. fantastic. We found two Man City fans in one spot. This is Bhai, great. Jayan, United fans deserve all this suffering. Those Bruno Fernandes and KDB comparisons will never be forgotten. ये कहना है हमारे नीतीश मीना भाई का. बट लेट्स टॉक अबाउट नितिन ब्रो. गैब्रियल हिजूस ब्लैंक बट स्टिल क्या कहते हैं, मार्टिनेली एंड आर्सेनल लुक गुड. रैमजेल में गुड सेव्स एंड देन ऑब्वियसली भाई अगर आप बात करो तो सलीबा वाज मैग्निफिसेंट इन दैट गेम. सलीबा ने बहुत वो जो लीग आ से परफॉर्मेंस लेके आया है वो यहाँ उसने दिखाया है. Young player of the year, right? हाँ, यंग प्लेयर ऑफ द ईयर. और उसने मतलब डिफेंडिंग वाज टॉप नॉच भाई, क्लियरिंग ऑल द बॉल्स एंड वाज रेडी. मतलब भाई जो डिफेंडर चाहिए होता है आर्सेनल Speaking फाइनली of, है. you set me up for a very inappropriate joke that I won't say because you were talking about. हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं बताओ. लेकिन भाई नितिन ब्रो, गुड गेम बाय आर्सेनल. यू थिंक आर्सेनल हैज. Okay, so I have to cut this off right there and ask Pranay a simple question. So me and Suraj were doing the watch along for the Arsenal game season opener on the channel, and I don't know about you, but it felt like the first 15 minutes they were going to win 4-0, and then after that it looked like they were lost at sea because Crystal Palace just started playing attacking. They started pressing them, and it looked like Crystal Palace were going to be in the game till the very end. Hmm. Now, I don't know what you think about that, but if you don't mind, I'll just read off a couple of stats because at first glance, I thought maybe I was, as a United fan of old, we enjoy Arsenal suffering more than anybody. But I just want to read some stats because it actually proved my point actually. So we have 56% possession of Crystal Palace, which I don't think anyone would expect in the first 20 minutes of the game. And they had like they both had kind of the same chances, the same shots on target, couple of shots off target, more block shot. I mean, it was quite even. I feel like the scoreline doesn't really prove a theory. And also, if you watch the majority of the game, it felt like Crystal Palace they always give Arsenal a tough time anyway. Let's be clear. हाँ Yeah, नहीं yeah, नहीं yeah, ऑब्वियसली yeah. So ऑब्वियसली. it's not shocking that they're given a tough time, but I just want to. I feel like Arsenal should not get ahead of themselves because it looked very promising for 20 minutes and then it looked like they were all lost. I don't know what happened after 20 minutes, but because they were just pressuring them, constant attacks, and then I think somewhere down the line Vieira just said, okay, just move forward now because don't let them take control of the game. And they pretty much did that. They ended up having more control over the game actually. हाँ मतलब रैम्सडेल के ऑब्वियसली इतने काफ़ी अच्छे पॉइंट मिले. Saves. सेव्स के हाँ, पॉइंट्स मिले save उसे तो points नहीं यार, saves भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे करे करते हैं. उसने. हाँ, हेडर भी सेव करते हैं. बाकी बहुत सारे I सेव mean, थे. I mean, Crystal Palace had 125 more passes मतलब than Arsenal, which is something when I used to watch Arsene Wenger play, I never thought that would be possible. If I'm being honest with you, I wouldn't expect Crystal Palace to have 100 passes more than Arsenal, and they do, and they Yeah. do. That's what I'm saying. I feel like people should not get मतलब ahead of them. It's a good win. They kicked off the हाँ season well. We didn't win, so I can't really hate on them. Liverpool did win. But that being said, I feel like it was not necessarily their best performance. I think there'll be more to come. Yeah. मतलब दैट वो तो पक्की बात है. द वे दे प्लेड द प्री सीजन इट लुक्ड लाइक कि दे आर रेडी टू स्कोर गुड अमाउंट ऑफ गोल दिस सीजन. और जैसा नितिन भाई ने बोला कि 20 मिनट से पहले अलग वो था और 20 मिनट के बाद अलग ही पिक्चर थी. और पिक्चर से याद आया अमेजॉन प्राइम पे ऑल और नथिंग आ चुका है और वो कॉमेडी कैटेगरी के अंडर है भाई. मतलब अमेजॉन प्राइम वाले भी दे आर डूइंग मतलब बैड थिंग्स विद आर्सेनल. बट प्रणय भाई योर कॉल. मतलब ऑब्वियसली वी कांट रीड अ लॉट फ्रॉम द ओनली वन गेम. बट क्या लगता है आपको आर्सेनल के बारे में? नहीं, आई थिंक यार
ठीक है क्रिस्टल आई वुड कम्प्लीटली एग्री विद नेथन कि ठीक है एंड देयर वर सम मोमेंट्स एंड आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ सिटी फैन मैं क्रिस्टल पैलेस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता भाई they've beaten us so many times in the season. They beat us last game of the So season. It's full respect. I mean, It's full respect. and Vera is a fantastic manager, man. Like he's a fantastic manager. Like someone, you know, like he's so good. तो मतलब क्रिस्टल पैलेस के बारे में मैं तो नहीं बोलना चाहता, but I think when I'm just talking about Arsenal, I think प्री सीजन के हिसाब से भी देखूं और आई थिंक ठीक है यार दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ न्यू रीइंफोर्समेंट राइट नाउ इन द क्लब सो ठीक है दैट इज वन ऑफ द फैक्टर दैट मे बी थोड़ा टाइम लगेगा बट आई थिंक they will do fantastic man like I think one of the things the key elements is their strike I think Gabriel Jesus again नो मैटर ठीक है ब्लैंक करा कोई कोई वो नहीं है बट जिनचेंको है एट द बैक you know Zinchenko and Gabriel Jesus again they already come with a lot of history in Arsenal and even in terms of history also they have history with Arteta as well because Arteta was there at our club before तो आई थिंक उस मामले में मे बी ठीक है यार आई थिंक थ्री पॉइंट्स इन द बैक फॉर देम गुड फॉर देम ड्रॉ होता या हारते तो इट वुड हैव बीन लाइक उनको थोड़ा सा लगता उस चीज़ में बट आई थिंक ओवर एंड ऑल आई थिंक आर्सेनल विल बी एज सून एज द सीजन प्रोग्रेस you know that's a team that you need to definitely watch out for they've done their majority of the business also it's just about setting up the team now हाँ मतलब Also, बिल्कुल can I just ask you a question because I was just reading the comments. Oh, hi, football with comment, and Arsenal will be back soon, as he said. So I have a simple question to you: Are they winning the league? नहीं ऑब्वियसली back as in back बैक into the बैक Champions फोर्थ League बैक No, बैक टू द back. फोर्थ वही है उनका फोर्थ तो हो जा हाय मैं I can just hear the Arsenal fans in the background. बट बट सिंपली मतलब एक मैंने कमेंट कल पढ़ा था अबाउट ब्राइटन दैट ब्राइटन शोड एवरीथिंग दैट यूनाइटेड लैक इंटेंसिटी अब गेम प्लान हंगर फ्रॉम द प्लेयर्स एंड ऑब्वियसली भाई मेरे मेरे मतलब मेरे तो दिल में ब्राइटन के लिए जो कल इज्जत बढ़ी है इफ यू मतलब जो सेकंड गोल है 3 टचेस एंड दे आर इन द मैनचेस्टर यूनाइटेड बॉक्स दिस इज हाउ मच मतलब वरिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड इज राइट नाउ क्योंकि भाई ब्राइटन भाई सिंपल पासेस से यू कुड रीड कि भाई अब किसको बॉल दिया जाएगा अब किसको बॉल जाएगा सिंपल डिफेंडिंग नहीं हुई कि ब्लॉक द शॉट अगर कीपर से लग के डिफ्लेक्शन आ रही है तो बी रेडी टू क्लियर दैट नोबडी वाज देयर टू क्लियर दैट प्रणय भाई योर व्यूज ऑन ब्राइटन मतलब रिस्पेक्टफुल ग्राम पॉटर इज ऑलवेज या मैन ठीक है बहुत सारे लोग इस मामले में बोल रहे हैं कि ठीक है यू नो लाइक दे शुड हैव यू नो दे मतलब जो भी है मतलब पॉटर का रिस्पेक्ट तो भाई ऑन ऑन टॉप ऑफ इट है यार मतलब लॉर्ड वेलबैक ब्रिलियंट अगेन मतलब डैनी वेलबैक प्लेड अ वेरी गुड गेम आई थिंक एंड अगेंस्ट फॉर्मर क्लब भी तो उस चीज़ में भी अगर मैं बोलूँ तो ठीक है लॉर्ड वेलबैक तो एट इट्स देयर बट यार मतलब आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ सरप्राइज किसी को यहाँ पे देखा वी ऑल नो द क्वालिटी दैट पॉटर हैज इतने सालों से आई थिंक ब्राइटन हैज had the probably the most I would say solid defense even though they have sold players like Ben White and you know Cucurella in the last 2 transfer window if you feel they still are you know a very good defensively like मतलब एक टीम जो evergreen जो रहती है डिफेंस में because of Potter is I think Brighton I've never seen them volatile or you know कि एकदम शॉट्स लेने देते हैं प्लेयर को मतलब इट्स वेरी टफ टू गेट पास ब्राइटन डिफेंस चाहे प्लेयर उनके पास उनके फ्रंट के प्लेयर हों या ना हो तो उस मामले में कुडोस टू देम आई डोंट सी एनी सरप्राइज द मेन थिंग वाज दैट सरप्राइज हमें बस ये देखना था कि हाउ विल you know like how can you know United or Ten Hag will you know do that was a surprise that we wanted all wanted to see जो कि दिखा नहीं unfortunately so yeah सादिक भैया इज इन द चैट आर वी एफ किंग सीरियस ब्राइटन के लिए इज्जत या यूनाइटेड की मिडफील्ड की बेइज्जती करनी चाहिए भैया मतलब उसके लिए तो मतलब 1 साल हो गया कर ही रहे एंड रैबियोट ओके टाइम फॉर एनेस्थीसिया दिस इज गोइंग टू बी पेनफुल तो सादिक भाई आपसे भी ये क्वेश्चन है लोग पूछ रहे थे मेरे ख्याल से तो ये पैनिक बाय है मेरे ख्याल से तो ठीक है तो लोग पूछ रहे थे कि इट्स अ पैनिक बाय और इट्स अ गुड बाय तो व्हाट इट इज़ अकॉर्डिंग टू यू रेबियोट ब्रो मेरे ख्याल से तो मतलब वही है जैसे नितिन भाई ने कहा कि जो रेबियो भाई की हिस्ट्री है
वो थोड़ी सी नकचिड़ी औरतों वाली में से एक प्लेयर रहता है, वो जो नकचिड़ी कपंती करता है। अगर वो सिर्फ अपने गेम पे फोकस करे तो मतलब नॉट अ बैड प्लेयर टू हैव, मतलब एंड नॉट वॉट अ वाओ साइनिंग, ठीक है। मतलब मैं कुछ अब ऐसा एक्सपेक्ट करने लगूंगा मिडफील्ड से रेबियो के आने से विच इज़ आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं भाई। मतलब इतनी ज़्यादा मेरे एक्सपेक्टेशंस बाहर नहीं जाएंगे, बट ठीक है भाई, इट्स ऑलवेज गुड टू हैव डेप्थ इन द मिडफील्ड। तो मैं तो ये कहूँगा अनदर ऑप्शन, एनी अदर ऑप्शन देन मैकफ्रेड इज इट्स गुड फॉर श्योर, मतलब उसमें तो पक्की बात है। Did you see the stats of the game after? नहीं मतलब ऑब्वियसली मैं See, बहुत रो see, चुका था। this is the problem, right? This is the problem. It's stats normally people don't really care for, but some of the stats are very telling. A lot of our stats are positive compared to Brighton. And if you watch the game, you think we are going to get relegated because that's how bad it looked. Because that is the style of football we play now. Like for example, would you believe if I told you we had 220 more passes than them? हाँ सेकंड हाफ में 220 more passes. भाई नितिन भाई, ऑब्वियसली अगर ना मैनचेस्टर यूनाइटेड जीते या मतलब मुझे गेम में लगा है No, कि no, देयर no. इज I'm just समथिंग इज saying. I'm हैपनिंग। just saying. When we watch the game, I would never guess we have 200 more passes. No way. I would have never guessed. And when you look at the stats, whatever, yeah, you don't want to take it, don't take it. It's fine. There's no issues. But when you get the tally at the end, and you realize that basically what we do is we just do a lot of sideways passing, basically, because you have 20 more passes. You can't. It doesn't make any sense to me. It shouldn't be possible. So, with that being said, Brighton played a fantastic game. They showed us no respect, and that's what you get. That's what you get when you think you're better than other people because you're a supposedly better quality side. And that's exactly what happens to you, like Fulham did to Liverpool. The exact same thing happened to us. Not surprised at all. Yeah, Graham Potter's fantastic manager. I'm surprised he's not got a better job yet. Please take the England jobs. Gareth, stupid Stop, gate. stop Please it. get rid of. Please get rid of him. I like him, man. What? No, dude. Bro, I like bro, Southgate, man. Come bro. on. Five right backs for the Euros. Five right backs. That will see, na. That will see, man. I think he did a very good job. Like I, ठीक है, like the like. Respectfully, Pranay, he's a clown. अभी अभी किससे वो हंगरी से, हंगरी काफी हंगरी हो गए थे ना, हंगरी के Yeah. अगेंस्ट 4-0। See, that's exactly my point, right? You're making a pun on the word hungry, but that's what it looked like in the game. They were hungry and they showed them no No, respect. dude. And And Gareth one second, Southgate one just second. plays Hungary, around even all the in the time. Euros, was I don't know हाँ how they went out, dude. They were the नहीं, most. आई नो हाउ दे। I like they were on fire, dude. उनका वो कौन सा प्लेयर जो रिटायर हुआ उसके बाद यूरोस के बाद नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, डिफिकल्ट बहुत नेम। फेमस प्लेयर है। हंगेरियन स्ट्राइकर, ही इज अ स्ट्राइकर। मेरे को नाम। बट आई नो कि व्हाई दे वर आउट, बिकॉज दे वर इन द ग्रुप ऑफ डेथ ऑब्वियसली अगेंस्ट Yeah, and he फ्रांस, was जर्मनी Yeah. एंड they played the पोर्चुगल। best football, man. They would have, I think they would have easily reached till semi-final if not being into the group of death. नॉकआउट में No, no, तो I'm just saying, right? When you compare quality to hard work and an attitude, a mindset, quality is just not good enough. It's quite simple. Hmm. भाई जो भी है रक्तिम भाई, मतलब सीविया सोल्ड देयर टू ऑफ देयर सेंटर बैक्स अराउंड 80 million एंड आल्सो साइंड द सीवीसी डील, बस दे आर yet to register their new signing. UCL semi-final Villarreal have not registered their new signing, but Vidia will make it look like only Barcelona are facing difficulty because you are Barcelona, obviously and भाई वो जो लेवर ला की, लीगा में दो क्लब का मेजॉरिटी वो है। हाँ मतलब ऑब्वियसली हमें पता है कि भाई कितना पार्ट रियल मैड्रिड और बार्सिलोना लेती है ला लीगा का, तो ऑब्वियसली अगर इट वुड हैव बीन रियल मैड्रिड, जो कि कभी टचवुड ऐसी प्रॉब्लम ना है, तो ऑब्वियसली रियल मैड्रिड में भी इतनी बड़ी लाइट होती, बिकॉज ऑब्वियसली लोगों को तो ये भी नहीं पता कि 2 सेंटर बैक चले गए, अब कौन से सेंटर बैक आए हैं, नोबडी नोज अबाउट दैट एज वेल, नोबडी मतलब इतना कोई केयर नहीं कर रहा। एडम सजलाए हाँ, Uh, Adam Szoboszlai. Yeah. and they also didn't have Dominic Szoboszlai as हाँ well. He got injured before. He's a very promising player in the Bundesliga. So. भाई अगर यूनाइटेड, प्रणय भाई कैन यू आंसर दिस, अगर यूनाइटेड एफडीजी के लिए 80 million देने के लिए तैयार है तो 100 million राइस के लिए क्यों नहीं दे रही? राइस तो नहीं यार अभी, मतलब आई डोंट थिंक सो, एंड राइस इज नॉट 100 million प्लेयर यार, बट हाँ व्हेन यू कंपेयर इट टू द अगेन, मार्केट राइट नाउ। हाँ इफ यू कंपेयर इट टू द मार्केट राइट नाउ, कोई कितने भी प्राइस में कुछ भी जा रहा है, यू नो, लाइक दैट इज द सिचुएशन। अब वैसे तो
अभी मैं बोलूंगा तो like I'll be in big trouble, so I won't say. But Say it, yeah, Say say it. it. Yeah, there is I no mean, excuse. Say it. even I don't feel like Barcelona paid a lot of money for Rafinha. I think Rafinha or Lewandowski, I don't think they paid a bit more. And same with Real Madrid, yeah. Tchouaméni Shomani is. भी 100 million, I don't think so. हाँ No, 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 मतलब no, 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 no. Chouamani was 100 million. Okay, remember that. Someone told me that. So I'm reminding them. मतलब It was 100 million. we'll see. मतलब हाँ ठीक है मतलब यार, सच बात है भैया, सच बात है बट मतलब 100 million इज अ टैग दैट इट्स अगेन। अब ऐसे उस मामले में तो मैं भी बोलूँ, तो मैं सिटी के लिए भी बोलूँ तो सी जैक ग्रिलिश आल्सो इज नॉट वर्थ 100 100 million। million हाँ. बट वी आर लिविंग इन दैट एरा कि ठीक है, मतलब आई कम फ्रॉम लाइक, अगर मैं मेरे लिए 100 million मीन्स रोनाल्डो, लाइक दैट्स व्हाट यू गेट फॉर 100 million, लाइक द सुपरस्टार स्ट्राइकर। बट आज के मार्केट में ठीक I है, literally said, Pranay, I don't think anybody is worth 100 million. To which I think Suraj was on the chat. It was नहीं the नहीं Arsenal game. नहीं मैं And मेरे को was it you, Jan? And Jan was like, there are people worth 100. I'm like, I don't see anybody worth 100 नो million. नो डूड इवन No one is that stand out to me नहीं नहीं anymore. मेरे It's को या मेरे को मेरे को लगता है देयर आर सम प्लेयर, सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लेयर हु आर वर्थ दैट मच मनी. See, Mbappe is worth 100 हाँ, million for sure. that Like was the name that I took. Mbappe, Exactly. Mbappe is worth 100 million for sure. But I don't see even Haaland. I feel is 100 million. Like आज के हाँ market में we मैं got him for 60 million. I don't know how we got him for that's a 60 million. bargain, that's a That's a bargain. bargain. That's a bargain. But see, that's what I'm saying ना कि when I compare, let's say Haaland जैसे प्लेयर्स की इसी ट्रांसफर, ये तो नहीं कि किसी और ट्रांसफर विंडो में आया, इसी ट्रांसफर विंडो में आया, ठीक है। फिर कुछ ईयर्स का भी होता है कि देर आर कितने ईयर लेफ्ट हैं, कितनी इमीडिएट नीड है, फलाना ढिकाना। बट आई वुड से कि लाइक आई सेड 100 million के हिसाब से तो राइस डोंट सी हिम देयर। अनदर प्लेयर Bernardo Silva, I think, is somehow 100 million. Like that Somehow, is what I feel. somehow, Somehow, somehow. like I probably 90 million, probably मतलब 90 million, अब but not बार्सिलोना 100 million. बार्सिलोना 80 कितनी बार्सिलोना देगी तो आप ले लोगे. हाँ व्हाट डू यू बट थिंक? हाँ बट सी अगेन ले रहे हैं, मतलब ट्रांसफर, मतलब क्लब्स कौन से हमारी जेब से पैसे दे रहे हैं, whatever they want to pay they pay, and that's it. Get the But player at the end that's that हाँ obviously. that's my stand on that. हाँ Bernardo is priceless if the Manchester knows how to use him. But लेकिन प्रणय भाई, your call on Pep Guardiola and Manchester City letting him go for some amount of money. We are not letting him go, he wants to go, there is a difference. हाँ मतलब if he wants to पेप go. वो पिछले सीजन भी जाना चाहता था, वो पिछले सीजन भी जाना चाहता था, लेकिन पेप ने रोक लिया उसको। इस सीजन भी आई थिंक उसको रोक लिया, मोस्ट लाइकली आई वुड से। भाई मतलब बार्सिलोना ना जाए, देखो एक एक साल रुक जाओ, रियल मैड्रिड भी आएगी बेड में. I'm pretty कहीं sure. पे देख, कहीं पे मैं तो चाहता हूँ कि वो ना ही जाए, हाँ. बट अगर जाता है तो फिर ऑफ कोर्स देन यू गेट द मैक्सिमम मनी आउट ऑफ द क्लब तो ना, जो देन तो हाँ वी कैन पे मोर ऑब्वियसली, और हम तो इंस्टॉलमेंट में नहीं अभी दे देंगे. यू लो भाई 100 मिलियन लो पकड़ो या फटाक से. मैन। हाँ मतलब बट मैं वही है, बर्नार्डो सिल्वा जिस टीम में भी जाए इज अ डेंजरस प्लेयर He's टू. Oh my he's the God, best. it's actually true. हाँ क्या? बर्नार्डो सिल्वा पे वो कर रहे हैं. No, रैबियो Rabiot. रैबियो डंडी हियर वी गो हो गया भाई. Here we go No, हो but गया। apparently a deal is agreed. माय गॉड भाई इतनी अगर तुम इतनी जल्दी कर सकते हो ट्रांसफर्स, तो और भी प्लेयर्स इतनी जल्दी करते हो, लटका के रखा हुआ भाई को. Dude, I told you, Ten Hag took it to them after the game, हाँ 100%. पक्की बात है कि मैं तुम्हारे वजह से गाली क्यों सुनूं बहन के बेटो. बट प्रणय की टोन भी लाइक, अरे यूनाइटेड कहाँ, नेक्स्ट सीजन हम ले लेंगे टू पेयर हिम विद कैल्विन फिलिप्स एंड केडीबी. नहीं यार, अभी तो आई थिंक अभी तो हमारे हिसाब से टीम इज काफी सॉलिड। आई डोंट वांट एनीवन टू गो आउट, आई डोंट वांट एनीवन टू कम इन, But दैट्स if इट। Bernardo Silva goes out, who do you think is going to replace him? There is none like him, that's for sure. But do you think anybody can replace him? अभी एक बीच में ऐसा यार देख, मिडफील्डर्स तो आई थिंक स्टिल है हमारे पास काफ़ी, बट आई थिंक वेराटी का भी चल रहा था काफ़ी बीच में, बट अगेन वेराटी एंड बर्नार्डो आर टू वेरी वेरी डिफरेंट प्लेयर्स आई वुड से। लाइक अगेन एक हर एक प्लेयर का अलग अलग ही रहता है, यू कांट रिप्लेस हिम एट द एंड ऑफ द डे। बट ठीक है, आई थिंक ट्रस्ट गार्डियोला मैन, आई थिंक मोस्ट लाइकली विल ट्राई टू सेव हिम। लाइक मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि बच जाए भाई, लूक मत डियोंग भाई जा। कह रहे हैं कि रफीना के लिए 58 देना पड़ेगा क्योंकि चेल्सी भी थी. सेम विद चुआमिनी एंड यहाँ लेवा वाज ओवरपेड. ओके मतलब मेरे को द अदर वे अराउंड लगा कि नोबडी वुड से कि लेवेंडोस्की इज ओवरपेड बिकॉज द अमाउंट ऑफ गोल्स ही स्कोर्ड डे इन डे आउट. एंड चुआमिनी का तो ऑब्वियसली देयर वाज पीएसजी, देयर वाज लिवरपूल, एंड
PSG तो हमारा पूरा का पूरा ट्रांसफर खत्म करने में लगी हुई थी, तो इट इज मतलब बट ऑब्वियसली चुआमेनी इज अ स्मार्ट गाय, आई कैन अश्योर यू ऑन दैट। बट प्रणय भाई कोई एफपीएल टिप देना चाहोगे आप लोगों को टू कुछ मतलब कि कोई हरकत मत करना, गैब्रियल हीसुस मत निकालने लगना हाँ मतलब बहुत सारे लोग अभी मेरे को ये पूछ रहे हैं. सो टुडे वी आई हैव अ स्ट्रीम 9 बजे. सो वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल. मी एंड बाबा हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल. आई जस्ट गिव अ प्लग इन एफपीएल पंचायत, जिसमें हम एफपीएल के बारे में ही बात करेंगे. तो अ लॉट ऑफ पीपल मैसेज, बट आई वुड से कि यार देखो, फर्स्ट गेम वीक में कुछ नहीं है यार. अगर अब ये थोड़ी ना गैब्रियल जीसस नहीं परफॉर्म करा, लाइक जैसे मैं अपनी टीम अभी बिल्कुल चेंज नहीं करने वाला. बेली है मेरे पास, नहीं परफॉर्म करा, ठीक है. अब आर्नल्ड ने 1 पॉइंट दिया तो इसका मतलब डजंट मीन कि यू विल रिमूव हिम. सो दैट सेम थिंग गोज विद अदर प्लेयर, कि तुम अगर किसी प्लेयर को तुमने टीम में रखा है तो यू हैव हैड अ बिलीफ ना, कि तो उसको एटलीस्ट 2 या 3 गेम्स तो दो कि भाई कि वो कुछ करे. अब तुम अभी तुमने निकाला, अब तुम गैब्रियल जीसस को निकाल दोगे. तुम फॉर एग्जांपल नेक्स्ट में तुम हालैंड ले आए, हालैंड क्या पता ब्लैंक कर दे, या कोई और तुम प्लेयर ले आए उसको तुम ब्लैंक कर दे. ऑल्दो हालैंड तो नहीं, बट मित्रोविच को अगर मैं एग्जांपल लूँ, मित्रोविच ब्लैंक कर दे. तो अगेन डोंट गो फॉर एग्रेसिव चीज़ के लिए, कि मतलब तुम एग्रेसिवली डोंट मेक अ रेज ट्रांसफर. वेट कर लो, एंड डोंट अभी भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है. पूरा वीक देखो, अभी ट्रेनिंग होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, सब कुछ होता है. तो एंड में तुम देखो, एंड या जस्ट चिल मैन. अभी 40 पॉइंट मिले हो चाहे 80 पॉइंट मिले हो यार, एक गेम वीक में कुछ डिफाइन नहीं होने वाला. यू कैन कवर इट अप इन 38 गेम वीक्स. तो वो चीज़ है. सच बात है, बिल्कुल सच बात है कि दोस्तों ऐसे कोई क्लियर इमेज दे भी नहीं रही, क्योंकि ऑब्वियसली लिवरपूल ड्रॉप्ड पॉइंट्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड ड्रॉप्ड पॉइंट, एंड आधे लोग तो यही लिख रहे थे कि यू कैन सी मैनचेस्टर सिटी विनिंग द टाइटल बिकॉज 1 पॉइंट से पिछली बार जीते थे, अब तो 2 पॉइंट की वो है. बट दैट इज ऑल वो. बट Yeah. प्रणय भाई मैं आपसे यही पूछना चाहता था कि डू यू थिंक चैंपियंस लीग में क्या, मैं एक ऐसा आउट ऑफ द वो क्वेश्चन है कि क्या लग रहा है आपको इस बार चैंपियंस लीग, क्या मैन सिटी फाइनली हैज दैट थिंग? होपफुली मैन, होपफुली. अभी चैंपियंस लीग इज टू अर्ली टू से एनीथिंग. अभी तो ग्रुप भी नहीं निकले हैं. तो आई वुड से कि ठीक है, जस्ट वेट फॉर इट एंड लेट्स सी. बट मतलब मैं तो बड़ा खुश हूँ कि भाई देखो, मैं तो चाहता था कि हाईलैंड गोल वोल मारे, ये वो, नॉट बिकॉज कि समवेयर डाउन द लाइन वी माइट बाय हिम बट वो तो किसी और प्लेयर का था ना वो तो. भैया देखो सब कुछ सही है, बट ये नहीं. बट यार योर कॉल ऑन वेस्ट हैम एंड एस्टन विला, व्हाट्स सिटी के वर्सेस तो देख अगेंस्ट, तो वेस्ट हैम का जीतने का तो कोई चांस ही नहीं था. बट अगेन वेस्ट हैम इज अ गुड स्क्वाड यार. इट्स अ वेरी 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 गुड स्क्वाड. ठीक है, लाइक दे, आई वुड से कि ठीक है, थोड़े बहुत देवर partially, like they were not into game, but there were few moments of course. आगे थोड़ा मेरे को देखा था थोड़ा happening in let's say Antonio going ahead. तो उस मामले में I would give it up to West Ham. Again top 6 या top 4 में तो जब भी तुम मैच खेलते हो you can't judge them at just one performance, कि अगर कोई टीम अच्छा खेल रही है, खराब खेल रही है. बट पूरा पिछले सीजन भी काफ़ी अच्छा उसने, I would say कि you know जितने एक होता है ना कि कम रिसोर्स में, कम चीज़ों में, मतलब जितनी भी चीज़ों से उसने उस स्क्वाड को खड़ा करा है, विच इज़ अगेन ग्रेट. सो आई थिंक आई वुड से कि वेस्ट हैम अगेन, आई थिंक टॉप 6 विल प्रॉब्ली मेक टॉप 6, द 6th एज वेल. एस्टन विला नॉट दैट टू श्योर ना, वुड बी वी हैव टू आपने वेट एंड वॉच. 6th पे रखा उनको, तो फिर यूनाइटेड को ही आपने बाहर रखा है टॉप 6 से? यूनाइटेड तो, क्योंकि यूनाइटेड यार, आई थिंक यूनाइटेड को बहुत कुछ करना पड़ेगा यार अगले 3 हफ्ते में, बहुत कुछ. एग्जैक्टली बहुत. एंड वो मेरे को लगता नहीं कि इतने कम टाइम में कुछ हो पाएगा. बट आई नो एटलीस्ट 3 मोर प्लेयर्स they need to buy players यार. मतलब getting, and not There just are about 10 teams spending money, that have it's about, outspent us. मतलब not about spending money, they are getting players, चाहे वो कैसा भी player हो. United is spending Rigid. money, but they're हाँ, they are rigid. they want to get players, they should get players, as simple as that. और बिकॉज ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स अब खत्म हो गए मार्केट में, एन नंबर ऑफ प्लेयर्स हु आर स्टिल रेडी टू स्विच क्लब्स. आई डोंट थिंक सो यार. मतलब जैसे जैसे ट्रांसफर विंडो बट हाँ, खत्म के obviously हो भैया, जाता है ना, लेकिन प्लेयर्स डोंट मूव यूजुअली, क्योंकि तुम्हारा प्लान बन जाता है ना. कोई प्लेइंग 11 में कोई है तुम्हारा पार्ट ऑफ द प्लान Exactly, जो that's what I was trying खेल to रहा tell है, Jan. वो नहीं आएगा. क्यों आएगा यार? कोई अच्छा भी नहीं प्लेयर, यार. अगर तुम उसे कितने भी पैसे दो, फीस पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट,
पहली बात तो वो क्लब नहीं जाने देगा, फिर क्या वो प्लेयर जाना चाहता है, फिर प्लस ही वांट टू गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड व्हिच इज स्ट्रगलिंग राइट नाउ एंड ही वांट्स टू एब्सोल्युटली गेट स्लेड देयर. राइट नाउ व्हाट आई सी इज दैट अगर कोई अच्छा प्लेयर भी अगर आता है, इफ ही गोज इनटू यूनाइटेड सिस्टम, उसकी धज्जियां उड़ जाएंगी भाई, until he has a bunch of other players to support him, you know. So that is the main thing. And like I said यार, top 6 would be tough for United this season. मतलब ये season तो बहुत ही ज़्यादा tough होगा उनके लिए if they don't get players. हाँ भैया, लेकिन फिर भी जैसे अभी फेबियन रूई का नाम निकल के आ रहा है, स्कमाका वाज देयर, ठीक है, अभी भी काफ़ी प्लेयर, अगर आप बात करो रियल मैड्रिड से आप उठा लो तो डेनिस सेबायोस है स्टिल, मतलब अगर आप 15 मिलियन दे दोगे तो प्लेयर लाइक डेनिस सेबायोस, मतलब ऑब्वियसली ही हैज़ क्वालिटी, नो डाउट अबाउट दैट, ही कैन गो टू क्या कहते हैं, थोड़ी दिन पहले तक अभी तक इसको भी वॉज ऑन क्या कहते हैं ऑन द चार्ट्स, ठीक है, कि आप उसको भी साइन कर लेते हो, तो देयर दीज आर प्लेयर्स, मतलब ऑब्वियसली आपको CDM रोल चाहिए, बट I can guarantee, I can bet with anybody that they are better than what the bunch of guys you have. Nathan bro, your call on Chelsea. We haven't talked about Chelsea वैसे. We have talked about Arsenal, Tottenham. Chelsea के क्या call है? They played the game against Everton. Everybody was thinking कि भाई 3-4-0 तो कहीं नहीं गए, ठीक है, क्योंकि Everton again a team जिसको लोग कह रहे हैं कि relegate हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा. Lampard is not happy to hear that, but at the end it was just 1-0 and that too was a penalty. Yeah, it's one of those interesting games. So they had way more ball possession, but they had way more chances. They were pinning Everton back. Everton didn't really have much for them actually, but still the differential would be a penalty. So it will look very deceptive. But I think at the end of the day, Broha is not good enough. I don't see him start. And if they're going to play Havertz up front, I don't. Fantastic while he lasted, and then Timo Werner was actually better than him, so that says a lot. And both of them aren't there. So, and I think Broha's too young. I'm surprised they didn't send him on loan again to a better team West to Ham see. West I Ham mean, see, listen, no disrespect to Southampton. He actually did pretty well considering how Southampton's style of play is, which is who knows how many goals they're going to concede every week. And it is shocking, but at the same time, they need a backup striker. And if they don't have a backup striker, I just see them struggling based on that. Not necessarily bad football or lack of chances, just lack of maybe finishing ability might be the difference maker this season. Which is ironic because it was the season before that where they had Abraham and then bought in Lukaku, sold Abraham, and then it turned out to be the same thing. So I think it's basically the same problem again, I guess you could say in a way. And also, is Azpilicueta going to stay along He's his staying. long? He's staying. Aspilicueta is gonna stay. उसने तो बोल Alonso. दिया he's So staying. as He's Two so years as contract the extension. yeah. perfect. He's a good servant to the club, no matter what anyone would say about him as a footballer. Go for 80 mil. You know what we bought, so let's just move on from that. The best Rather than defender just in not. this world. Harry Berry. Oh my God, भाई I सच mean, में I could go on my channel and explain to people how you could blame Maguire or not blame Maguire, but quite honestly, it wouldn't make any difference because everyone's just going to blame him anyway. So, but yeah, so it was all in all, I think it was a solid performance. But I think मतलब सब्स्टिट्यूट करे, आप देखो बोरा को वो लाया, यू कैन नॉट जज बोरा भाई, वो एक स्ट्राइकर है, आप उसको लेफ्ट विंग पे खिला रहे हो, तो डिडंट मेक एनी सेंस. आप देख सकते थे कि मिडफील्ड में देयर वाज नो क्रिएटिविटी एट ऑल, फिर भी आप कैलेगर को नहीं लेके आए या जो भी, ठीक है, आप कोई भी ऐसे क्रिएटिव तुमने काम कराने वाला कोई मिडफील्डर लेके नहीं आए उसमें, ठीक है, एंड श्योरली इट फील्स दैट द टीम इज इनकम्प्लीट एंड यू नीड मोर एंड मोर प्लेयर्स, that is for sure. और Koulibaly obviously the positives from the game were their new signing. Sterling ने chances बनाए, Cucurella was good when he came off the bench, और Koulibaly is equal to he looked dangerous. हाँ, he looked I dangerous. remember him. I remember him fizzing a grounded cross across the box. I was like, oh god! Just when you need a number 9, a penalty box merchant, you don't have one, and that's exactly what happened. Fantastic signing. Very excited to see Cucurella play. Also thought it would be better for us when we played Brighton, but again, didn't make any difference in the end.
भाई मेरा क्या स्ट्रीम लैग कर रहा है? मेरे को तो नहीं लगता यार स्ट्रीम लैग कर रहा है, क्योंकि मतलब मेरे यहाँ तो सही दिखा रहा है। अगर कर रहा है तो बता दो यार। प्रणय भाई आप देख रहे हो तो या ये मेरे को तो कोई भाई दिक्कत नहीं लगी। आप लोग गरीब हो, मैं गरीब नहीं हूँ। ये जयंत की वाईफाई की जयंती नहीं है आज, मतलब। बट अगर सब्सटीट्यूशन की बात, maybe just refresh the stream, guys. हाँ गाइस Maybe, I प्लीज़ don't know. प्लीज़ प्लीज़। और अगर अच्छा चल रहा है स्ट्रीम बट बीच में लैग कर रहा है, पता नहीं यार भाई, सबको एक बार वो करना पड़ेगा। बट मैं तो ये कह रहा था कि टॉकिंग अबाउट जयंत वाईफाई इज रिलायबल लाइक हैरी मैगवायर, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल भाई। मेरा तो रूबन डियास बता रहा है Just यहाँ going to पे। have to get used to those jokes until we get rid of him, हाँ, can't we? मैं नहीं भाई, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा कि पहले उसको कैप्टनसी से नहीं हटाया, गेटिंग रिड ऑफ हिम तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई। बट नेवरदलेस प्रणय भाई, लेकिन सब्सटीट्यूशन की बात करें अगर ट्यूचल की, तो टेनहैक भाई ने भी कुछ ऐसे तगड़े सब्सटीट्यूशन कर नहीं दिए थे, एंड वेरी वेरी लेट सब्सटीट्यूशंस टू बी वेरी ऑनेस्ट इन अ गेम वेयर यू हैव टू कम बैक। मेरे लास्ट में भाई ने जाके क्या 4 सब्सटीट्यूशन करे थे, उससे पहले एक रोनाल्डो लेकर आए थे वो, और उसके बाद किसको लेके आए थे? Three, three, दे- three, three at the end. हाँ, थ्री एट Three दी at, एंड, थ्री एट दी एंड। पहले वो लेके आए थे रोनाल्डो को, देन yeah. देन हु केम, वेन द बीक केम ऑब्वियसली। हाँ, Van de Beek वीडी भी, came. हाँ, Van de Beek वैन came भी for गेम। Fred, I think. Yeah, and then Malacia. Funny enough, guys, whoever watches Manchester United, something Solskjaer and Ragnick did as well. The ridiculously late substitution where he can't do anything. हाँ So even Ole Gunnar and Solskjaer did that to Van de Beek. Everyone got mad. Today, when Ten Hag does it, Ragnick does it, nobody gets the blame. हाँ, But मतलब it वही seems है। like a say, similar situation every time for some reason. हाँ मतलब मैं तो यही बात कहूँगा कि मतलब नेक्स्ट ईयर सेम ओल्ड स्टोरी, न्यू ईयर सेम ओल्ड स्टोरी, यही चीज़ चल रही है विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मेरे को नहीं लगता ये चीज़ टॉटनहैम इन टॉप 4। बट हाँ मतलब मैंने कहा था कि भाई दिल से मैं ये चाहता हूँ रियलिस्टिकली समथिंग एल्स वुड हैपन, ठीक है। लेकिन लोग ने कहा कि नहीं जयंत भाई तू दिल से बता, दिल से बता। फिर मैंने दिल से बताया, देवर लाइक कि लेट्स कीप इट रियलिस्टिक ओनली। तो मतलब दैट वाज द फन फैक्टर। बट भैया अगर हम बात करें तो चेल्सी वर्सेस टॉटनहैम नेक्स्ट वीक। टॉटनहैम, डू यू थिंक देयर इज अ श्योरिटी दैट टॉटनहैम इज गोइंग टू विन? डू यू थिंक लाइक, मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई टॉटनहैम तो जीतेगी, दिस इज द न्यू टॉटनहैम? मतलब किस स्पर्स का तो मैं तो बोल ही चुका हूँ नहीं, स्पर्स के बारे स्पर्स में। वर्सेस चेल्सी है नेक्स्ट गेम वीक, तो आपको क्या लगता है? स्पर्स, आई थिंक आई गो विद स्पर्स यार। डेफिनेटली, मतलब एक एक बड़ी जल्दी अर्ली 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 प्रिडिक्शन, गोल कितने कितने, 2-3 कूलाबाली? नहीं नहीं यार, इतना भी। आई थिंक इट विल बी नैरो वन? टफ। हाँ, आई थिंक इट विल बी नैरो विन यार, 1-0 2-1 ऐसे रहेगा, एक गोल का ही लग रहा है मेरे को। मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि अगर इस बार हम टॉटनहम को देख रहे हैं तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट जस्ट वन गोल, आइदर दे आर गोइंग टू कंसीड, बिकॉज आप हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप बैक पे जाओ तो देर इज डायर एंड बेन डेविस, डायर, बेन डेविस, रोमेरो, ये इनकी स्टार्टिंग वो है। और इनके बाद बैकअप में इनके पास लॉर्ड लैंगले, एंड आई नो आई हैव सीन लैंगले मैच इन मैच आउट हाउ गुड ही इज़, बट आई एम प्रीटी श्योर ही कैन शॉक एवरीबडी। और उसके Yeah. बाद उनके पास है कोलंबियन मास्टर क्लास सैंचेज एज वेल। तो मतलब ऐसे रिलायबल सेंटर बैक ऑप्शंस नहीं है उनके पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और बेन डेविस का दिमाग कब घूम जाए, वी हैव सीन। But I think overall if I would say कि अगर मैं बोलूँ पंट लेने के लिए, तो पंट क्या मतलब मेरे को पता है यार। आई थिंक मोस्ट लाइकली इट विल बी स्पर्स दैट इज गोना विन, ऑल्दो इट इज लंडन डर्बी ऑफ कोर्स। बट आई जस्ट समहाउ फील कि भाई आई थिंक स्पर्स आर गोना स्मैश इट। लाइक अगेन, चार भाई, तुम कोई टीम जो 4 गोल मार के आ रही है ना, मतलब, एंड आई थिंक दे गोना स्मैश इट आने वाले इसमें। और पूरा सीजन आई थिंक एंटोनियो कॉन्टे विल बी रेडी फॉर एनीथिंग दिस सीजन, क्योंकि उसको अपने अभी तो रिचार्लिसन भी, भाई हमने तो आधे प्लेयर्स तो अभी उसने खोले भी नहीं है यार अभी, जो जिनको ठीक से वो खिला सकता है और टीम में। तो आई थिंक उस मामले में, बट या इट्स गोना बी अ क्लोज वन, बट 2-1, आई थिंक 2-1 और 1-0 आई वुड गो फॉर दैट। Nathan bro, your prediction, early predictions? 2-0. Kulusevski and Kane.
Kulusevski and Kane. Oh my Yeah, goodness, भाई lights out, lights out. London is whatever color Tottenham Hotspur's uniform is, white and terrible blue, whatever that color is, whatever that is. नितिन ब्रो, वाह आर्यन ठाकुर भाई का एक क्वेश्चन है. आई एम सॉरी आर्यन ठाकुर भाई, मैंने पहले नहीं लिया. आप दोनों से ये कि यूनाइटेड शुड गो फॉर 4-3-3 और 4-2-3-1 एंड एब्सोल्युटली नॉट एरिक्सन एज देयर मेन स्ट्राइकर फॉर श्योर, जो एरिक टेन हैग ने गलती करी थी पिछले मैच. दैट्स अ श्योरिटी भाई. कोई भी हो वो स्ट्राइकर नहीं होना चाहिए. नितिन ब्रो, योर कॉल. 4-3-3 या फिर 4-2-3-1, विच लुक्स मोर लाइकली फॉर यू और मोर सक्सेसफुल? Most successful 4-3-2-1. 4-3-2-1. Sorry, 4-2-3. 4-2-3-1. Sorry. Yeah. मेरे को लगा कि Simply because the midfield's too wild, too unpredictable. All three of them, all three of the stalwarts, they're too chicken in the coop, as they like to say. They just run around. It's great because some of our players don't run around at all. But if the middle is a wide gaping hole, then it doesn't really make a difference what formation we play in. We could take Thiago Motta's formation. What was it? 2-7-1. We can just throw everyone in the front there. Just let Lisandro Martinez and Slabhead block the long balls with their forehead. बट मेरे को तो ऐसा लगता है कि नेक्स्ट मैच में ना, चलो मतलब मेरे को लगता है अभी से ही बड़ी पैनिक है, तो आप पैनिक में खिला दो मैगवायर वेरान बैक में, लिसांड्रो मार्टिनेज आप मिडफील्ड में खिला दो. कम से कम एक कंपोजर इन कामनेस ऑन द बॉल वाला बंदा तो कोई होगा. दैट इज So fun fact. 2 seasons ago, Lisandro Martinez played as DM. हाँ, वो तो है कि And- कैन प्ले एज अ डीएम. And the thing is, right, when we found out that Van Gaal basically told Timber not to come to us, so people don't rate him as much as Timber and Martinez, but I would prefer Edson Alvarez because we need the player that actually plays the position we really need someone in. So I was looking for Edson Alvarez, but we got Martinez, and then as soon as we got Martinez, people were like, okay, good, he can play DM if we need to. And this is the problem, right? It's again putting people in positions they don't belong. We could have just gone for Alvarez. We could have gone for Sangare. As soon as people heard that we might be interested in Sangare, he signs a new contract. नो कॉन्ट्रैक्ट. He signs a new contract, so he becomes too expensive to buy. So basically, to sum it up, sorry Pranay, I know they asked No you. problem. No formation is going to make a difference, but 4-3-2-1 just so there are people in the middle of the pitch. Quite simple. प्रणय भाई, एक क्वेश्चन का आप आंसर दो, इसका तो नितिन भाई ने बड़ी भली भांति आंसर दे दिया है. विच टीम डू यू थिंक इज गोइंग टू बीट मैनचेस्टर सिटी फर्स्ट? Crystal Palace. क्रिस्टल पैलेस. मैं तो कहूंगा टॉटनहम हॉटस्पर्स बिकॉज़ कॉन्टे नोस. I'm going Somehow. to take a punt. I'm going to say Nottingham Forest. European royalty. lol. No. Not because of that. Because I actually saw Nottingham Forest play in the FA Cup matches. They were actually good. Like I've been telling Jayan this. They were actually really good in the FA Cup. Like they showed again another team that showed no respect to the Premier League. Knocked out Spurs. They knocked out Leicester. They did well. They only lost to Liverpool 1-0. नितिन भाई एक सेकंड. दोस्तों, प्रणय भाई को जाने का टाइम हो चुका है. प्रणय भाई, थैंक यू वेरी मच. एंड फॉर श्योर मैं सूरज भाई के साथ आपकी एक FPL स्ट्रीम करवाता हूँ, ठीक है? मैं एक Done यार. बोलता हूँ. लॉर्ड सूरज को लॉर्ड बोलो सूरज यार, भाई. थोड़ा सा ज्ञान हमको भी दे. नहीं, आपके पास भी ज्ञान है अपने भाई. और दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा तो FPL पंचायत को ज़रूर फॉलो करें. ऑब्वियसली आपने देख ही लिया होगा, और गलती होगी अगर आपसे टैकल फ्रॉम बिहाइंड को ना फॉलो लॉर्ड सूरज को भी बुलाते हैं जब उनका अच्छा गेम वीक जाता है तब. तब चलिए, मजाक कर रहा हूँ यार, ऐसे ही बुला लूंगा यार, और क्या. लॉर्ड सूरज will be there. So thank you man. I have to go. Please share. Thank you Nathan. Thank you Jayant for Thank you. calling. Baba. We'll थैंक be यू back वेरी मच. very soon. हमेशा Thank you. एक बार में रिप्लाई करने के लिए थैंक यू मींस अ लॉट यार. थैंक यू वेरी मच. Thank you. सी बड़ी भाई. बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना, मेरे ख्याल से लगता है व्हेन इज मर्च कमिंग टू माय हाउस. भाई जैसे ही तू आया मनहूस, वो चले गए. ठीक है, तो भाई
मैं तो यही कहूँगा कि हाँ भाई बर्नार्डो सिल्वा टू बार्सिलोना लुक्स लाइक अ प्लान। मैं तो अभी भाई मैंने इतना कुछ वो देखा नहीं, मैं सच बताऊँ तो जैसे मैं स्ट्रीम पे आया उसके बाद से बातें शुरू होने लगी कि उसके बाद क्या कहते हैं कि उसके घर देख रहे हैं जर्ड रोमेरो। भाई देख, मैं जर्ड रोमेरो को और किसी चीज़ पे मानूँ ना मानूँ, बट बार्सिलोना की अगर बातचीत हो रही है, जर्ड रोमेरो इज़ अ गाय यू शुड ट्रस्ट भाई फॉर श्योर। उस भाई ने जितनी भी साइनिंग्स लिखी थी एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस समर विंडो, मतलब इकर ब्रावो कैसा प्लेयर है, इकर ब्रावो कैसा प्लेयर है ब्रो, ठीक ठाक भाई मेरे ख्याल से, मतलब यंग लैड। अगर मेरे ख्याल से अगर तू उसी बंदी की बात कर जिसकी मैं सोच रहा हूँ तो यंग लैड है भाई। हैप्पी बर्थडे जयंत भाई। भाई आज नहीं है भाई, आज नहीं है, 2 दिन रह गए दोस्तों। और मैं वो बताना चाहूँगा कि 2 दिन कम्युनिटी पे पोस्ट डला हुआ है, अगर आपने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा गिव अवे में, डू पार्टिसिपेट इन द गिव अवे। ओनली 2 days टू गो, और जन्मदिन के दिन अपन सबको बता देंगे कि कौन जीतेगा भाई। लतासा लिविंग मेड्रिड, नेथन हासरा भाई यार क्या ऑब्वियसली, बट ठीक है। Hashtag. अबे यार तेरा We गिव have Latasa. भाई परसों ख़त्म हो जाएगा यार, परसों, सो क्लोज। क्या आपको लगता है रियाल 25 मिलियन में फेबियन रूइज साइन कर लेगी? नहीं भाई, वो फेबियन रूइज के लिए रियाल मेड अगले साल जाने का सोच रही थी व्हेन ही वाज अ फ्री एजेंट, बट नॉट पेइंग मनी ऑन हिम, दैट्स फॉर श्योर। फेबियन रूइज इज क्लोज टू पीएसजी, और दिव्यांश भाई जितनी कॉन्फिडेंस से लिख रहे हैं आई गेस हियर वी गो भी हो चुका है, बट नहीं भाई, वेरी 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 क्लोज टू। मेरे ख्याल से प्रणय आईफोन गिव अवे करना, बाबा को स्पॉन्सर कर लेना, बना लेना लॉल भाई, विच इज़ वेरी 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 गुड ऑप्शन भाई। मैं तो कहूँगा इट्स ऑलमोस्ट डन। हाँ भाई ऑलमोस्ट डन है, सबसे ज़्यादा क्लोज वही है। सीक्रेट डील दैट ओकम्पस वाज वर्किंग ऑन, एंड फाइनली वो डील कंप्लीट होने वाली है। अब मेरे को लगता है भाई, मैं काश मैनचेस्टर यूनाइटेड बीच में जंप करके कुछ करने की कोशिश करे, बिकॉज बट वही है भाई, वो चैम्पियंस लीग फुटबॉल खेलना चाहेगा तो ही विल, मतलब ऑब्वियसली। बट वराने और रोनाल्डो एक दूसरे को देख के क्या बोल रहे थे नेथन ब्रो, प्लीज टेल मी, थिंकिंग, आई नो यू डोंट हैव अ रिप्लाई। So they were saying, let me tell you, they were saying, why did we leave Real Madrid? No. I saw the meme, but here's the thing, right? Again, Varane doesn't get along with Ancelotti, and Huh? well, Ronaldo technically came from Juventus, so I don't really understand the joke, but sure, dude. Like what else can you say? Obviously, मतलब, but obviously. Now No, Skriniar I mean left. like why do you leave Madrid? If I remember correctly, Varane wanted to, and Ronaldo left 3 years ago. So I mean, I don't know. Okay. Not sounds like a hello boy से बदास भाई व्हाट्सअप। मैं मेडिट पंडित ब्रो, यश की जिंक्स ज़्यादा खतरनाक है एंसेलोटी की विंग्स। भाई एंसेलोटी की विंग्स भाई, उससे ऊपर कुछ नहीं है। रैबियो टू मैनचेस्टर सून, अ प्लान ए, प्लान बी फॉर डियोंग, और कम्प्लीटली अ डिफरेंट प्लान। मतलब भाई Well, according to David Ornstein, Barca FC, basically after the match yesterday, it was told that we need a midfielder no matter what. So technically, it's not a plan A or a plan B. Apparently, it's just an addition, like an addendum. So even if tomorrow De Jong comes, the plan was to still buy another midfielder all of a sudden. So if हाँ मेरे anything, plan A still seems to be plan A, and we just got another player right now. हाँ भाई, और अगर आप पूछो तो, अगर आप ये बोलो कि भाई क्या इससे क्या एक्सपेक्ट करते हो, तो मैं तो कहूँ इतना भी कुछ ऐसा नेक्स्ट लेवल से नहीं, कहाँ से कहाँ आ गए हम भाई। लिटरली मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई प्लेयर साइन नहीं करा दैट विल श्योरली चेंज ईच एंड एवरी थिंग, मतलब यू विल सी अ वेरी मेजर इम्पैक्ट, but obviously he's upgrade over what they have in the midfield right now. I'm not talking about Bruno to be very honest, but you know मैकफ्रेड की जोड़ी बनाना चाहती है दूसरों को, but बन जाती है खुद ही घोड़ी, you know that. Who's interested in Skriniar? I just saw the chat saying. PSG दिव्यांश भाई, आर यू अ PSG सपोर्टर? प्लीज टेल मी यार, बोल दो, हाँ बोल दो एक बारी, क्या आप एक PSG सपोर्टर हो? गेमोपीडिया, बर्नार्डो सिल्वा लुकिंग फॉर हाउस इन बार्सिलोना। यस भाई मैंने भी सुना, लेट्स सी इफ ही कैन फाइंड वन। जेरार्ड रोमेरो ने कहा तो फॉर श्योर यू हैव टू अग्री। माई यूनाइटेड, वाई मैन यूनाइटेड कांट साइन अंडर प्लेयर्स लाइक रॉबर्टसन, फेबिनियो, मैटिप, माने एंड मेक देम स्टार्स। एग्जैक्टली Well, माई क्वेश्चन। oh, wait, hold on a minute. Fabinho played for AS Monaco. How was he underrated? That was a good side when they signed it from him.
But then talk about Mane, Matip, and Robertson. And Robertson played for Hull, like a solid championship team, and they also got him हाँ for सॉलिड. championship prices. हाँ 5 मिलियन तो वही है ना, तो गो Yeah. गो एंड मतलब So वही है. we got Malacia, right? 20-year-old From promising young talent. Oh, Eindhoven? No, not Eindhoven. What's the Eindhoven, right? हाँ तो मतलब नॉट Eindhoven. Yeah. नॉट मतलब फिर भी यार ऑब्वियसली रॉय कीन और उसने Sorry, Feyenoord. Feyenoord. फाइनवुड से लेके आए हैं वो. और दूसरी बात है, आई टोटली अग्री विद व्हाट रॉय कीन एंड दिस गाय गैरी नेवल सेड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस. फाइनली दे आर फाइन. मतलब रॉय कीन तो हमेशा ये बोलता है, बट फाइनली दे आर. Roy Keane said it. Roy Keane said the players are going to get Oli sacked. हाँ द When प्लेयर गॉट. when Ole took the job, like that half year, after the half year ended and we fell out after having a strong start, 17-game unbeaten streak. Roy Keane said the players will be the downfall of the भाई coach, आर्नल्ड and now उनके we don't have coaches. मतलब उनके प्रोडक्ट है उनका. मैं लिवरपूल प्रोडक्ट है आर्नल्ड. उनके क्या कहते हैं Yeah, उसे, यूथ एकेडमी का प्लेयर है भाई. इन हाइंडसाइट yeah. लेटिंग मोरिनियो वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ यूनाइटेड. यस यू कैन से दैट. यस प्रोबेबली. No, actually you can't say that because the football wasn't very great. He 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 created dissent amongst the players, and then the player he ही did the same thing in a second stint in Chelsea, and that is how he got sacked from Chelsea as well. The exact same thing. आई डोंट He नो got sacked because इफ ही he वाज डूइंग created a दैट lot और of dissent. Of course, he created a lot of dissent when they finished नहीं. 12th मतलब or whatever, मेरे ख्याल से तो जो and मेरे ख्याल से players तो go to cricket. मेरे ख्याल से तो जो भी ज़्यादा सच बोलता है उसे मैनचेस्टर यूनाइटेड निकाल देते हैं. फॉर एग्जांपल राल्फ रैगनिक वाज नॉट डूइंग एनीथिंग like what you said about Mourinho, and I'm pretty sure No, about he that. did. He did. He did. Uh, He did create. Before the season. Of course he did. That's why the English media were happy. Of course he did. English He media तो भाई please. wait, hold on. Hold on. After the open heart surgery, post-match game. Sorry. You know that the interview. You know the interview we saw yesterday, right after the stream ended. On one of those, he said, "This team needs open heart surgery. We need 10 new players in, 10 new players out." And the English media ran with that, and they said Ragnick was 80% among the team. They And that is why he lost his administrative job as well नहीं भाई, ये तो because they ऑब्वियसली तो भाई इंग्लिश मीडिया तो मेकिंग मतलब वर्थलेस no, न्यूज. but he मतलब publicly yeah, but he मैनचेस्टर यूनाइटेड publicly रियली said we need 10 players in, 10 players out. Na? ऑब्वियसली दैट्स द He's रियलिटी. the one who said that. दैट्स द Yes, रियलिटी. but when you say that, I agree. But when you say that, you create dissent. Like when Mourinho goes on the same post-match conference and says Luke Shaw needs to lose weight. It's the same Obvious, thing, isn't it? obviously he You're needs missing to. the point. But when you create Obviously yes, he but when needs you to. create dissent, you can't expect those same players who have already got two managers sacked to play for you as the third manager. You can't अबे expect तो that. ऑब्वियसली. That is crazy. बट यू डोंट एक्सपेक्ट कि बोर्ड भी तुम्हें बैक नहीं करेगी. यू आर सेइंग सच थिंग बिकॉज यू वांट प्लेयर्स टू गेट चेंज. एंड रैल्फ रैंगनिक वाज अ इंटरीम मैनेजर एंड द मेन थिंग ही वाज ब्रॉट इन वाज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन जॉब. और उसको अगर रहने देते. Exactly. And here's the thing, right? If you add that up, I told you it did make sense, right? In the last game of the season, when he said they need open heart surgery, he said, "I'm looking forward to working with Ten Hag. I'm going to meet him soon." He was in Manchester. They was in Manchester, and they did a Zoom call. So, so the players and the owners, because they didn't like his comments, kicked him out. And Chelsea players did the same thing to Mourinho in the second stint where they finished 8th or 9th or whatever because they were around relegation for a lot of the season. दोस्तों He स्ट्रीम को came लाइक out करें and अगर आपने लाइक नहीं करा तो. he came out and said there's a lot of player power. Eventually they got sacked and eventually they did a little better, but I think they were not in Europe that year. Same thing he came and did in Manchester. Those players already got Mourinho sacked. They did it to Oli, got Oli sacked. Did it to तो Ragnick, got वही है. Ragnick sacked. मैं यार Mourinho went to Spurs, did the same thing with Tanguy, Ndombele, and certain other players. He got sacked there. He's भाई actually done it everywhere, got मैं sacked. टेनी वेयर इज एंड डोम्बेले. No, He's you're not at missing the Spurs. point. He's not at Spurs. When have you Tottenham he's left a, because he's a, no, no, Tottenham left because of that Super Cup thing that came. ठीक है. he And not because still he in was. Spurs, man. And Ndombele is still in Spurs. They haven't got rid of him. नहीं He एंडोबेले went on loan.
हाँ वही है, He went went on on loan. loan. He's not. Still here. Do you think he's going to play? No, He's no. So not, this is my obviously. point. But this is my Whatever, point, right? मतलब I'm not a big मतलब वो They bought him for 60 million. If he was sorry. that bad, they bought him for 60 million. If he was that bad, they wouldn't have spent that kind of money on him. भाई 60 million it's for a not. French league player. You spend an amount of money, but there is no guarantee that player will live up to that expectations. Okay, Obviously, there fine. are So under. when have you, okay, fair enough. When have you heard a coach go to someone's house and tell him, let's go, we are going भाई for a run? that is When the have you level. heard that? That is the level of dedication that the No, no, coach but you don't has. understand. When you are under the public eye, when you do it publicly, you could do this privately even, right? Are you trying to tell me भाई Sir obviously are you trying to tell me Sir Alex never did it? obviously he would have done it privately or whatever. मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि वो सीधे आके घर के बाहर खड़ा होगा कि He did चल. not, right? He did not, right? And you, dude, tell me something. If I want to come to your house and I'm on the streets, we're both celebrities. You think no one is going to notice? भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मतलब कटक रही है और आवाज़. I'm saying, if we walk on the street together, we go for a run, and you and me walk on the street, and we are celebrities. You think no one is going to notice us? A 60-year-old man and the player running next to each other in the streets of the city. You think Obviously no one? everybody would, but So, if you do so, that the so same thing privately. if he attempted to try, but that's what I'm saying. He could have done it privately, right? भाई दिव्यांश भाई मैंने That would create. Right? दिव्यांश भाई मैंने इसलिए पूछा कि क्योंकि भाई स्क्रीनियर पीएसजी से भी लिंक्ड है और किसी और टीम से, शायद कोई और टीम भी ला रही है उसको, चेल्सी है वो, तो चेल्सी की इसलिए मेरे को बस वो करना था पक्का. बट Sebadas, we didn't sign Gravenberch and Mazraoui because they had a deal in principle way प्रिंसिपल before the season ended with Bayern Munich. Because 6 months before your contract ends, if you choose not to renew with your team, teams from other country leagues can have a discussion with you. भाई दे So आर that is why we दे did sign आर Mazraoui भाई and जो भी हो, Gravenberch. नेथन ब्रो, यू आर टॉकिंग अबाउट मोरिनो. मे बी मोरिनो वाज द लास्ट मैनेजर अंडर whom you won trophies. Maybe Mourinho was the last guy who took Tottenham to any final. उससे पहले तो पोचेटिनो था, उसके बाद यही था. और उसके बाद टॉक अबाउट रोमा. Roma won a trophy after 20 years No, no, under Jose Mourinho. this is Bhai, this is obviously Jose exactly my Mourinho, point, right? whatever This Jose is my Mourinho point. said about Manchester United players, each and every player, he was accurate AF. But He said he about wasn't accurate at AF because Luke Shaw had a really good season before he broke his leg, before Mourinho even showed up in the team. And then he Pogba. had his He said and about then Pogba. he had his best 2 seasons after Mourinho left, Luke Shaw. If you see Obviously, all his things. but he said No, about no, Pogba. yeah, but Jay, now you're twisting the narrative because नहीं मैं बता रहा हूँ. I said something every time I came on your stream and said something about Pogba, it was met with negativity. It was like It's not. no, no, It would he's never met not with by you, negative. not by you, but like Suraj, for example. When I say Pogba is not good enough, he's world class. Like it doesn't matter if he doesn't play on the pitch. It does not matter. I said that today even about Rabiot. It does not matter. Like I'm not saying Mourinho was wrong about Pogba. In fact, he was very correct. There is no doubt about it. But at the end of the day, people go, "Oh, he won a World Cup with France. Mourinho doesn't know what he's talking about." Well, now the best part is he's at Juventus. We'll see what he'll do because he can't blame Mourinho. He can't blame Glazers. He can't blame Ole Gunnar Solskjaer. We'll see what he'll do. And when he flops, they'll say Ole Gunnar Solskjaer spoiled his career. It's the same narrative, na. Even though he was a Mourinho signing, he'll blame Solskjaer or Ragnick or somebody else because it suits their need, right? Lukaku threw Ole Gunnar Solskjaer down the bus, and guess what? Ole Gunnar Solskjaer was right. He scored 75 goals after he left the front three. He comes to Chelsea, fails. No one mentions that. Goes to Italy, gets outscored by a 36-year-old. No one mentions that. Lukaku. No one mentions. Yeah, he got outscored. Ronaldo scored more at the end. Right? Even though they did badly that season, he still scored more. No one mentions that. No one mentions what it's whatever you want to because that's not a flop, yaar. Obviously, Ronaldo No, scoring no, 29 and you but scoring 27 goals. That doesn't mean you're a flop. absolutely not. But we're considering where Juventus finished and where Inter Milan finished. It doesn't look good either. But after that, he won the Scudetto with Inter Milan. But that's what I'm trying to say, right? I'm trying to say when Ole Gunnar Solskjaer said he's not good enough, people said, "Ha, what are you talking? He's great." Today Solskjaer Tuchel 2 years later said the same thing.
So everybody is wrong except Romelu Lukaku. What are the chances, brother? What are the chances? You tell me, na? You tell me. नहीं मतलब मैं ये His कह रहा best हूँ scoring, कि his best scoring season was in Italy. What does that tell you? You tell me. You tell me. मैं तो इसमें यही चीज़ कहूँगा कि ऑब्वियसली मतलब हिम कमिंग टू चेल्सी वाज अ वेरी बैड आइडिया लुकाकू की तरफ से ही, दैट्स फॉर श्योर, बिकॉज ही वाज डूइंग ग्रेट इन सीरिया. इट वाज नॉट लाइक कि ओनली अगेंस्ट No, स्मॉलर टीम्स. he made incendiary remarks to Solskjaer because Solskjaer didn't want to use him, right? He did his thing in Italy, good for him. Came to Chelsea, then he makes incendiary remarks about Chelsea हाँ बिकॉज after he left. बट It's a joke thing, बट right? स्टिल बट स्टिल ही Now you वाज do well in बट Italy, they'll स्टिल ही go. वाज देयर Tuchel टॉप flopped it. स्कोरर. Tuchel flopped it. He was Yeah, still but he 12 scored goals. 10 goals. It's 12. embarrassing. 12 goals. Bro, what are you on about, dude? Literally 12 Bruno goals. Fernandes scored 9 goals, dude. That's Yeah, I embarrassing, know, dude. I know. I know What, Fernandes what scored argument? 9 goals. This is not an argument, dude. This is But not an argument. but it's not like ki it's only Lukaku at fault, obviously, bhai. No, but this is what I'm trying to say. Like Lukaku left us, blamed us, came to Chelsea, blamed Chelsea. So basically, it's not Lukaku's fault. नहीं He just obviously. somehow manages to do terribly in England. But नहीं it's the बट यार coach's fault. ऑब्वियसली यार अगर तुम मैनचेस्टर में मोरिनो की बात करो तो ऑब्वियसली मोरिनो सेड थिंग्स एंड भाई ऑब्वियसली प्लेयर्स जो हैं मतलब ऑब्वियसली द इंग्लिश मीडिया एंड यू कैन सी कि इट्स Good नॉट इन point द about Mourinho. बट Good point about Mourinho. Abraham worked under Lampard, didn't work under Tuchel, worked under Mourinho. So you know what I'm saying. But today everyone will say, "Oh, Mourinho has lost it." Okay, dude, maybe he's lost it. Maybe he's okay for the Europa League, conference, whatever. But at the end of the day, no, he's still a good coach. हाँ It ऑब्वियसली depends. It depends on what level and what बट players and what money he has. बट ऑब्वियसली यार टॉकिंग अबाउट अगर हम टेनेक की बात करें तो टेनेक को जो प्रोमिस किए थे वो तो मिले नहीं है. दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर प्रिटी श्योर भाई. मतलब Absolutely, I agree. And you know if what? the This is the players problem. have This is if the players have this much control over the club, it's not good yaar. It's not at all good. but Jayant, what do? You're a manager new to the league. You have to trust these players, even though these players don't Why deserve it. You have to, how can you because the trust? Glazers. You have seen them Huh, for more than a year. fantastic point. So I'm going to tell you something. Right? Just look at it logically for a second, okay? First of all, I just want to bring up one thing that I will slightly blame Ten Hag for. When Conte came to Spurs, he told Daniel Levy, "I want money, otherwise I don't want the job. Please don't. I don't want your job." He told him straight because every time I don't get money, I don't do well because I want to play a certain style of football. Okay, that's why he signed a month contract. I think, if I'm not mistaken, I don't know if he is extended. This will be his last season. So then he'll see what he wants to do. I think he only signed 18 months, if I'm not mistaken. हाँ दिव्यांश भाई. Okay, so that is Agreed. so that is the right. And and what I'm going to say is, if Ten Hag did his research on any level or listened to Van Gaal on any level, he should have said, "Listen, I need money before I come here. Otherwise, please leave me alone. I'm successful in Ajax. When you're ready to grow as a club again, give me a call. I'll be interested." So Ten Hag took this job, knowing probably that he's not going to get money. Now Ten Hag, because he's a good coach, has a certain sense of personal pride. He has a reputation, and he thought, based on his very first press conference, that he can make something out of this team because they finished, and I quote, second 2 years ago. That is the direct quote. So you have to put Ten Hag to blame for this because Ten Hag could have easily said, "I need money and I need my style of football to be played because sixth place, worst season in Premier League history, not good enough." Simple as that. He could have just said that. That is his negotiation tactic. Didn't do any of that. Said these words at Perth on the last friend. He said, "If we don't get players, we'll go with what we've got," which obviously is not done because now we have made a deal with Rapier. So Ten Hag looks very incompetent because now he's changing his strategy midway when the journalists ask them, who always get blamed for giving wrong information. When a journalist asks you outright, "What are you going to do if you can't get X player?" He says, "We'll go with what we got." Then now, after हम्म. one game, he wants to sign Rabiot. So it looks very contradictory, हाँ right? obviously Now, ये तो बात है ही. so if you know, and again, I saw David Ornstein say 1 hour ago, maybe 2 hours ago, Frankie De Jong prefers to stay in Barcelona. Why are we still after him? I don't know भाई. Why? Literally Frankie De Jong and Barcelona and anybody who comes in between,
is in trouble भाई. मैं तो कहूँगा it's a circus with Frankie De Jong that is going on भाई. सिंपल सी बात है भाई. फ्रैंकी डियोंग अगर आप देख लो तो पहले it was deferred wages, now it is that the contract is like fraud, और बर्टिमाउ ने जो भी करा था it is fraud. तो इट इज़ अ सर्कस, और उसकी वजह से बाकी क्लब्स भी उससे साइन नहीं कर पा रही. तो द बार्सिलोना एंड फ्रैंकी डियोंग सिनेरियो इज स्टक एज हेल, एंड देर इज़ नो सोल्यूशन अभी तक. तो अब तो अगर फ्रैंकी डियोंग पुराने वाले कॉन्ट्रैक्ट पा जाता तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. उसमें कोई दिक्कत वाली बातचीत ही नहीं है. उसमें तो कोई दिक्कत. द इंग्लिश प्लेयर वाला एंगल इन क्लब लाइक यूनाइटेड इज द सोल रीजन फॉर द अंडर परफॉर्मेंस. भाई मुझे तो समझ नहीं आता. दे हैड अ good 3 months 4 months, or you can say after the January they knew where they are. अरे ये बारसा स्विंग FDVG वाले रिलेटेड टू कॉन्ट्रोल फॉर वाला क्या सीन है भाई. वो लोग ये कह रहे हैं कि जो बार्टिमाउ ने उसको वो दिया था ना कॉन्ट्रैक्ट, वो फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट था. मतलब उसमें जो प्रोमिसेस या जो भी चीज़ें थी वो फ्रॉड थी, एंड उसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ फ्रैंकी डियोंग आगे नहीं बढ़ सकता. ही नीड्स टू स्विच टू द first contract that he signed with Barcelona. That is what they are saying. Let's see what happens. Bhai, Ayush bhai. And I just answer Bhavesh's comment. Bhavesh, my favorite player is not Lord McTominay, but He's not Lord. Jan can attest to this. Last season, we had plenty of better quality players, not even willing to run. Forget tactics, forget shots on goal, forget crosses. Run. Simply run. Put in a jog. And one thing you can say, whatever anyone wants to say about McTominay, you can't say that about him. Simple. You can't say that about him. You can say whatever you want about it. Not good enough. Should be in the championship. Whatever. You can never ever question his effort. Never. कल की game Manchester United, one of the lowest total running teams last season. And I can tell you right now, it is not because of Bruno Fernandes, Fred, and McTominay. I can tell you right now, it's not because of them. I don't even know what the stats are, and I can tell you it's not because of them. So, if you have talent and you don't work hard, what difference does it make? सही बात. That's all I'm going to say. Higher over by what is up. Yesterday, if you joined us on the stream, you could have heard me say, why have we not started Ghana? That is literally one of the things I said. I was looking forward to Ghana playing more than anybody, even more than Ronaldo. Yesterday's game, I was looking forward to watching Ghana play. Didn't happen. आयुष ब्रो, तू एक पहले मैच में इतना वो क्यों हो गया जजी कि मैन सिटी प्लेयर सपोर्ट हालैंड, इट्स गुड, बट व्हेन अल्वारेस केम दे नॉट गिव हिम पासेस इन फाइनल थर्ड और इन द बॉक्स. भाई अभी तो एक ही गेम हुआ है. तो भाई आयुष वर्मा मेरे को याद है तेरा कमेंट कि अल्वारेस ज़्यादा गोल मारेगा हालैंड से, एंड इट्स नॉट गोइंग टू हैपन ब्रदर. मतलब ऑब्वियसली हालैंड विल बी ऑन फायर फॉर श्योर भाई. 20 गोल्स तो आ ही रहे हैं. और दोस्तों जिसने स्ट्रीम लाइक नहीं करी, स्ट्रीम लाइक कर दो, और नेथन ब्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ द चैनल लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. तो आप जाके प्लीज़ सब्सक्राइब करें. और Please like and subscribe, guys. I'm going to do my first ever stream with the OGs, because that is exactly what my dream first stream was supposed to be. I'm looking forward to doing the United stream with them. It will be Brentford, I believe, and it will be Saturday. I'm looking forward to it. Please join us. I'm sure Giant will put it up on his social media. He'll tag the time and all. I mean, I will too as well. Please follow me on Instagram. And yeah, I'm looking forward to seeing what changes can be made now. I mean, I've said my piece yesterday and today. I don't want to simply go on a rant. Simply because one game does not make a season, but at the same time, there is no difference. So we have to see 3-4 games. Also, I'm looking forward to watching the Super Cup with Giant on his birthday. Plus, I'm looking forward to seeing the first La Liga game. I will be joining a streams for La Liga this season to basically watch some more different football, because I get a lot of judgment for only watching PL. So I'm looking forward to you guys on the chatting with you all on the La Liga तो stream, कैसे हो लेजेंड्स? बढ़िया. watching some different football. यस भाई. तो दोस्तों आपको पता ही है परसों आपको कहाँ आना है, और परसों तो ऑब्वियसली जन्मदिन है. अब मेरे को एकदम से एहसास हो रहा है, और ऊपर से रियल मैड्रिड का मैच भी है. तो रियल मैड्रिड वर्सेस फ्रैंकफर्ट यार, फाइनल है भाई. एक बर्थडे के दिन एक ट्रॉफी गिफ्ट आ जाए तो भाई मज़ा आ जाता है. और गिव अवे की रिजल्ट्स भी उस दिन निकाले, तो टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन बर्थडे इज नॉट गुड. तो अगर आपने नहीं करा है पार्टिसिपेट गिव अवे में, तो 2 days टू गो गाइस.
आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, मैंने आज ही शेयर करा है। आप TCSB के कम्युनिटी टैब पे जाके देख सकते हो, आज ही शेयर करा है। तो यू विल डेफिनेटली फाइंड द गिव अवे वाला सिनेरियो। सो डू पार्टिसिपेट यार। फ्री की जर्सी मतलब अगर आप अमीर हो तो ठीक है, बट वैसे तो फ्री की जर्सी किसी को बुरी नहीं लगेगी। हेलो ब्रो लूसी यार, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। ये हेलो लॉस हुई भाई। ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 7-0 हराया हॉकी के फाइनल्स में कॉमनवेल्थ के। हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया से ही जीत नहीं पाते, कैसे भाई? हार्ड लक भाई। हॉकी में तो वी आर डेफिनेटली गुड। और कल क्रिकेट वुमेन्स टीम look at वर्ड ऑफ SK Pratap's comment. warning for Nathan. Small La Liga teams have adopted someone's haram balls and small La Liga teams, bro. Bye. वैसे It doesn't matter, SK. I decided this season that I will watch अरे La मुझे एक Liga. चीज पूछनी थी FPL related. Lucy bro, please ask. Sorry यार Nathan भाई. And no problem. I promised Jayant I'll watch some La Liga football, and as long as his stream is not crowded, I will join in the watch along with him. I'm sure he'll have other content creators watching along with him as well. And I actually just want to watch. I'm looking forward. They have a very tough opening game against UD Almeria, so I'm looking forward to it. So let's see what happens. भाई क्या पूछना था यार भाई? पूछ मैं तो वैसे बात करना चाहूँगा भाई। एथलेटिको मैड्रिड लास्ट नाइट डिफीटेड Juventus 4-0 and guess who scored this hat trick? It was Morata against Juventus and Morata was on fire. He scored 3 goals और फिर क्यूनिया ने एक मारा 4-0। एंड दोस्तों उसी के साथ साथ मैंने ना थोड़ा सा एथलेटिको मैड्रिड का लाइनअप देख लिया। मैंने लाइनअप देख लिया भाई। What was the lineup? भाई वी हैव अगेंस्ट द माइटी रॉय वालों का ना भाई। द लाइनअप वाज एक्सल विट्सल in the back three brother, as a center back, and I don't know what happened, but it was a 3-5-2। हाँ यही चल रहा था 3-5-2। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई। व्हाट्स अप विद यू? कैन यूनाइटेड गो फॉर पैराडाइज? मेरे ख्याल से भाई जाना तो चाहिए। Paredes is already joined the club actually, if I'm not mistaken. Which club? Wait, I'll tell you guys. I'm pretty sure I read it just. I think I read it either yesterday or मैंने today. अपनी टीम से कोई प्लेयर को निकाला तो उसके जो मनी होगी वो मेरे को वापस मिल जाएगी क्या? हाँ भाई, अगर तू प्लेयर निकालता है तो उसको No. Not if they have lost हाँ। their value in the game. देख, अगर उनकी 5 मिलियन थी और काफ़ी लोगों ने उसको निकाला है तो वो शायद 4.8 पे ड्रॉप हो गया होगा। तो मतलब जो भी उसकी वैल्यू होगी करंटली वो तेरे को मिल जाएगी। I think Juventus want Paredes. Someone mentioned you. We were talking about Juventus. I think he's going to Juventus. he was going 21 hours ago. PSG transfer could help Juventus sign Paredes. पैराडाइज। हाँ अभी तक साइन हुआ नहीं है। they were No. They are not signed him yet. But because of that Pogba injury they have to look for, और उसके वजह से मतलब you are happy, but वही है भाई। अगर मैंने No. I'm not happy he's injured. I'm happy he's not my problem. Simple. मतलब दोस्तों आई टुडे व्हाट ऑल आई डिड वाज। वैसे जयंत भाई कहाँ है आज भाई? मैं जयंत हूँ, मैं यही हूँ। सूरज भाई आ गया है वो ट्रिप से, वो सो रहा है भाई। पॉइंट्स ड्रॉप नहीं होंगे। नहीं भाई, अगर तू एक फ्री ट्रांसफर है अब तेरे पास, हर वीक एक फ्री ट्रांसफर होगा। अगर तू उससे ज़्यादा करता है तो -4 होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों नितिन? -1। Yes, and sometimes you might have to take that chance depending on injuries and depending on your substitutes. If the substitutes don't play, sometimes you have to take a chance of doing more than one sub. Kryptonite United can sign Paredes, but no, they will not sign him because they are United. Fair enough. दोस्तों डू लाइक द स्ट्रीम इफ यू हैवंट टिल नाउ। और ये स्ट्रीम हम और बात करें दोस्तों। व्हाट ऑल आई डिड टू भाई, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे थैंक्स भाई। मतलब मैं वैसे भाई सोच के बताना हु विल फिनिश हायर। भाई पूछ भाई अभी स्पर्स जीतेगी लीग भाई? क्या बात है? चेल्सी और टॉटनहम? मेरे ख्याल से भाई टॉटनहम अभी जो टीम है उसके हिसाब से अगर चेल्सी। बट दोस्तों आज मैंने क्या किया कि आज मैं बैठा, मैंने बोला भाई ला लीगा के साथ बड़ा बुरा हो रहा है। ला लीगा के ट्रांसफर्स की बातचीत नहीं हो रही, ला लीगा के ट्रांसफर की बातचीत कोई नहीं कर रहा, तो मैं उसकी भी बस स्ट्रीम करूँगा। Painfully has a good question. What do you think regarding replacement for Bernardo if he goes to Barca? I know he can't replace as current, but who can be closest? भाई Bernardo Silva, मेरे में जब प्रणय भाई आए थे and I asked him the same question. He said कि भाई किसी से भी बात
भाई लालिगा की भी फैंटेसी करवाओ। यस दोस्तों, यस यस यस, मैं इस पे ही आ रहा था कि आई वाज लाइक कि लालिगा की फैंटेसी नहीं होती, बट देन आई फाउंड आउट लू सौ भाई ने लिखी दिया लालिगा की फैंटेसी में मार्का। लालिगा फैंटेसी ऐप है एक, लालिगा फैंटेसी मार्का, ठीक है, इट्स अनदर ऐप, लालिगा के ऐप में नहीं है लाइक द प्रीमियर लीग। तो देर इज अ फैंटेसी मार्का द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर उनकी है वो। तो लालिगा फैंटेसी मार्का, तो दे हैव सर्टेन थिंग कॉल्ड लाइक सिमिलर टू एफपीएल। तो मैंने वो आज देख रहा था, आई वाज चेकिंग आउट। तो फॉर श्योर भाई किसने बोलता लॉस हुआ भाई, ऑब्वियसली मैंने आज वो चीज़ देखी। और भाई मैं लालिगा के ट्रांसफर्स भी देख रहा था, मतलब बहुत अच्छे ट्रांसफर करे हैं टीम से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई विल बी बेटिंग माई मनी on Celta Vigo this time कि they are going to cause some disruption against the big teams, मतलब Barcelona के against तो they are known for it। but अगर आप देखो they have got Mingueza, they have got Oscar Rodriguez from Sevilla as well, ठीक है। और काफ़ी ऐसे प्लेयर है। रियल सोसिएडाड की अगर आप बात करो तो उनके पास भी कूबो आ चुका है, ठीक है, इसाक है उनके पास। तो स्ट्राइकिंग ऑप्शंस में उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें करी हैं। बट अगर आप सिविया की बात करो ऑन द अदर हैंड, सेल्टा विगो हैव आसपास राइट, आसपास की कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा उन्होंने, तो काफ़ी। होजेलू बहुत हार्ड है, हाँ भाई बहुत हार्ड है भाई, बट तेरे को पता है who was a Real Madrid youth, right? राइट राइट राइट। He came to England even, right? He came to Stoke, I think. स्टोक सिटी he played there। एटलेटिको मैड्रिड will do damage to मैड्रिड। भाई एटलेटिको मैड्रिड यार, मैं वही कह रहा हूँ, मैं उनकी टीम देख रहा था। एटलेटिको मैड्रिड स्टिल हैव, मतलब अगर तू कल की अगर तुम टीम देखे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग हिमेनेज था, ठीक है, फिर एक्सेल विट्सल खेल रहा था। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स ऑन द बेंच, मतलब अगर अच्छे प्लेयर्स की तो बात करें तो वो बेंच में थे, बट स्टिल देर वॉज फिलिक्स, देर वॉज मोराटा, देर वॉज क्यूनिया, देर वॉज लेमार, देर वॉज करास्को। तो ऑब्वियसली दे हैव कोके एंड डोंगबिया वॉज ऑन द बेंच, ठीक है। तो इतने सारे प्लेयर, हरमोसो, लोडी एंड देन देर वॉज रिवाल्डो जो वो नया लेके आए हैं, ठीक है। तो ये सारे सॉरी नॉट रिवाल्डो यार, वो राइनाल्डो मंडावा, दैट इज फुल नेम। तो ही वॉज ऑल्सो प्लेइंग। तो मतलब देख ऐसा, मतलब उन्होंने प्लेयर साइन नहीं करे, एंड देर इज रोड्रिगो डी पॉल एज वेल। ऑब्वियसली द टीम इज स्टैक्ड विद क्वालिटी। आई होप कि जो वो है हमारे सिमियोने साहब वो काफ़ी अच्छा करे, क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड की अगर आप बात करें तो दे स्टिल हैव द टीम भाई, द पेस इज़ देयर, ठीक है। एक्सेल विट्सल और एक और प्लेयर है मैन्योला करके कुछ उन्होंने साइन करा है, ठीक है। तो ये सारे प्लेयर्स हैं उनके पास, द टीम्स लुक गुड, ठीक है। एथलेटिक बिल्बाओ से आप काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्रेडिक्शन तो हम लालिगा की करेंगे ही। तो ये वाली बात है दोस्तों, जो मतलब रियल मैड्रिड सपोर्टर्स हैं, जो बार्सिलोना सपोर्टर्स, आई वुड रिक्वेस्ट देम कि भाई तुम अगर जागरूकता ही दिखाओगे ही नहीं अगर लालिगा के बारे में और टीम के बारे में जानने में ही, तो फिर मोलिना व्हाट अ प्लेयर, तो वही है भाई। तो फिर मैं अगर देखो यार, मैं तो वीडियो बना दूंगा, मेरे को तो वो है, मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड मैं लालिगा के अदर टीम्स के बारे में बात करना चाहूँगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा ट्रांसफर्स देखें, क्योंकि बार्सिलोना मेजरली बार्सिलोना रियल मैड्रिड के प्लेयर्स इधर उधर गए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपकी इसकी बात करी मिंगुएजा की। लालिगा का ये सीज़न ओपी होने वाला है, टॉप 5-6, हाँ मतलब टॉप 2 के बाद जो कंपटीशन है वो बहुत फाड़ है भाई। आई विल नॉट लाई भाई, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना ने अलग एक गैप क्रिएट किया है, बट एटलेटिको मैड्रिड फॉर श्योर भाई, एटलेटिको मैड्रिड फॉर श्योर दे आर गोइंग टू गिव प्रॉब्लम भाई। पिकी वन देयर वर रूमर्स दैट रोमन अब्रामोविच ओवर लंच, हाउ एक्यूरेट इट इज भाई, दे वर जस्ट रूमर्स, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट द ओनली थिंग नहीं यार, नहीं Chelsea 2.0 भाई हो जाए भाई, मज़ा आ जाएगा भाई, हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। चैन भाई कभी सोचता हूँ अगर सुपर लीग होता तो कितना अच्छा लगता है। ओसासुना, चिनिया विला, एजिकेल अविला from हाँ भाई। Osasuna. I know some players, Jan, but not हाँ that नहीं bad. ऑब्वियसली यू नो भाई, Thank you. लालिगा फैंटेसी मार्केट से प्लेयर्स में बिड करके खरीदना पड़ता है, एक प्लेयर सिर्फ एक टीम में ही जा सकता है, मज़ा आएगा। ओ हो Oh, that sounds interesting. दैट्स प्रिटी इंटरेस्टिंग भाई। एक प्लेयर एक ही टीम में जा सकता है, मतलब सबसे पहले जिसने डाउनलोड करा एंड गेट्स बेंजेमा, मतलब दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग भाई। जेरोना साइंस MLS गोल्डन बूट विनर, प्लेयर नेम इज वेलेटिन। हाँ भाई मैं जेरोना की भी अगर Castellanos.
जेरोना की भी तो टीम देखी तो जेरोना ने भी कोई अच्छे साइनिंग्स करे हैं अपना। लतासा शायद जिरोना ही जा रहा है ना शायद। लतासा जिरोना ही जा रहा है मेरे ख्याल से जयंत भाई। हाँ भाई मतलब क्या पता फिर रोज़ पीएसजी की बात होती नहीं भाई। मतलब रोज़ पीएसजी को हराते मज़ा आता है भाई। व्हाट अबाउट फिलिक्स टू रियल मैड्रिड भाई प्राइस भाई इट्स नॉट हैपनिंग भाई अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली don't waste any more money. बट There's ही विल। nowhere to play such players. There's nowhere to play such बट ऐसा players. कुछ भी नहीं हो रहा टू बी वेरी ऑनेस्ट। लिवरपूल बिहाइंड द सीन फैन सोशल मीडिया पे ना होते तो आज प्लेटफॉर्म बहुत पीसफुल भाई लॉल। भाई लतासा भी गेटाफे जा रहा है बरखा मायोराल गेटाफे गया है ना भाई। कैन यू प्लीज एक मिनट रफाल लेओ कैन बी ए गुड एडिशन टू मैन सिटी इफ बर्नार्डो गोज भाई बट द प्राइस इज टू हाई। द प्राइस इज टू हाई ऑब्वियसली बर्नार्डो सिल्वा के लेकर 100 मिलियन देती है बार्सिलोना तो यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम दैट्स अ फैक्ट। बेंजेमा का बजट 97 मिलियन होती है और अगर बजट सिर्फ 100 मिलियन देते हैं हैं Football with comment said Mayoral is to मायोराल Getafe. गेटाफे। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ बुरखा मायोराल इज गोइंग टू गेटाफे। I don't know. Kiddies somehow always start as relegation contender and end up thrashing big three of La Liga. हाँ भाई पिछले सीजन तो किडीज अच्छी थी रायो वैलेकानो बड़ी अच्छी थी। रियल बेटीज ने काफ़ी अच्छे साइनिंग करे थे एंड रियल बेटीज कैन ऑल्सो बिकम वन ऑफ द मतलब वही डेंजरस टीम इफ दे कैन हैव 15 मिलियन एंड दे कैन साइन द लाइक्स ऑफ यू नो डेनिस सेबायोस अगर वो ले आते तो मज़ेदार होगा। तो आपको पता है कि और भाई वेलेंसिया की टुक ओवर की बात हो रही थी। वेलेंसिया का टुक ओवर में सबसे बढ़िया चीज़ एक ही चीज़ हुई है कि द मैनेजर इज़ देयर गटूसो गेट रेडी फॉर सम मतलब हिज इंस्ट्रक्शन विल बी कि यू आर गोइंग विद 2 legs बट ब्रिंग 3 एन एक्स्ट्रा लेग विद यू। तो राइट नाउ मेसी अराइव इन बार्सिलोना सू। अच्छा बर्नार्डो को क्यों बेच रही है सिटी लेकिन भाई वो बेच नहीं रही है बर्नार्डो जाना चाहता है बिकॉज Do you think Messi goes back to Barcelona at the end of this year? नॉट एट द एंड ऑफ दिस ईयर। उसने कहा है कि शायद End वो of to your contract, right? So at the end of this year, right? I mean, end of this season, sorry. हाँ हाँ ब्रो यूनाइटेड आर साइनिंग रेबिड इंस्टेड ऑफ एफडीजी व्हाट हु आर यूनाइटेड स्काउट भाई They इट्स are नॉट not. They're not. Leo. They're not. They're signing him because no matter what, they have to make more than one midfielder sign. Don't worry. आयुष बैच It's भाई not बट not that bad. मैं भी यही चाहता हूँ भाई सबायोस अपना लड़का है। मैं चाहता हूँ वो खेले लेकिन तेरे को भी पता है मेरे को भी पता है कि भाई ही इज सेवेंथ ऑन द क्या कहते हैं लिस्ट ऑफ द मिडफील्डर्स भाई। पहले 3 केसीएम फिर तेरे को पता है सीटीवी सॉरी कामाविंगा चुआमिनी एंड वेलवार सीटीवी सीवी या सीटीवी हाँ सीटीवी है और उसके बाद दैट देयर इज सबायोस एंड मतलब भाई सबायोस इज सच क्वालिटी आई डोंट वांट टू Oh वेस्ट God, Pepe thinks contract extension. Hi, Tony Cruz. What is up? What is up? What is up, Tony Cruz? What is up? Love you, brother. A big fan. रेबियो क्यों एमयू जा रहा है भाई? बिकॉज मेन्यू ने बुलाया है और यही And है also, he has 1 year on his contract. बस। So तो जाना I पड़ता है। consider Ceballos the best captain option for Real Madrid. Okay, come on. I Let's go home now. आई कंसिडर Let's सेबायोस द go बेस्ट home. नहीं यार मतलब ऑब्वियसली ये थोड़ा वो है बट मैं तो अगर तेरे को बताऊंगा तो मतलब टॉप क्वालिटी प्लेयर भाई। उसको देख के ना मूड बनता है मूड है वो प्लेयर एक वाइब है वो मूड है भाई। इट्स स्टिल बेटर देन मैकटोमिने एनी डे भाई। नितिन भाई विल नॉट डिसएग्री ऑन दिस भाई। What is better still? व्हाट इज बेटर देन मैकटोमिने भाई? एवरीबॉडी इज बेटर देन मैकटोमिने ये नितिन भाई कहना चाहते हैं। Listen, Leo. Dude, how many times have I got to explain this? I don't know. Leo, see, quality and consistently playing good should not be mixed up. Okay, ही if इज कंसिस्टेंटली प्लेइंग गुड। if Adrian Rabiot is another ego in the dressing room, he eventually becomes a liability to the team. सो कौन Whether he's better than McTominay or not is not really in question. It is in question to get the manager in power now, and Adrian Rabiot will not provide that to us unless भाई आयुष he वाजपेयी has a surprising he has a surprising mentality change. Because when he was in PSG and they were winning everything, he was out of order. He's come to Who? Juventus. They didn't, he had issues. He was रेबियो ना रेबियो हाँ he's temperamental. He's temperamental. So they didn't just re-sign him. They sent him to Juventus. Now Juventus are willing to offload him. By the way, not this year, from last year, if people remember correctly. He survived one more year. He has 1 year left.
Now, if we get him, we have another ego in the dressing room, which is very problematic to me, in my personal opinion. True that, bhai. True that for sure. Fane Phillick describes Scott In one word, McTominay in one word. crap. I'll give you a really good word. Probably his best quality, hardworking. Hardworking crap. 2 words. Well, Two like I words. said, right? Like I Hardworking said, crap. if talent doesn't work hard, it means nothing. It is worse than a person that works hard. So, Obviously, भाई. Angry man has problems with rant man. भाई इसे वो fan of Fabian Rui to PSG. uh, भाई डन हो गया क्या रहमान भाई? डन. सबायस को मैनचेस्टर यूनाइटेड भेज दें क्या बताओ? हाँ भाई मेरे ख्याल से तो भाई बचा भेज दो. मेरे ख्याल से तो Danny मैनचेस्टर यूनाइटेड Danny Ceballos is toxic in the Premier League based on his performances with Arsenal. Do ठीक है. not be surprised. Do not be surprised if no Premier League team ever buys him for the remainder of his professional career. Don't be surprised. Because once they see him play like that in one team, no, people just are not interested in People are buying him. judgy. People are judgy. No, but they judge him on his performances, Kami dude. And Modista also, bhai, exactly. I am excited about Super Cup more than anybody else in this world because right now मेरे को butterflies हो रहे हैं because अब मेरे को वो लग रहा है कि हाँ भाई परसों तो मेरा बर्थडे है तो मेरा जन्मदिन भी है और सुपर कप भी है दोस्तों देखो विश करने तो आप आ ही सकते हो और मेरा बर्थडे यही गिफ्ट होगा कि आप इफ़ यू शेयर माई कंटेंट एंड क्या कहते हैं ऑब्वियसली बर्थडे विश करते हो तो भाई ऑब्वियसली दैट्स थैंक यू एवरीवन भाई जितने भी अभी चैट पे हैं थैंक यू वेरी मच दोस्तों क्या कहते हैं फॉर कीपिंग and staying here even after Pranay bhai left and for watching me and Nathan speak about anything about football. Fane Phillips, don't worry. Angry Rantman, Man United version is right here. I'm just waiting Obviously for bhai. the. I am literally waiting for the transfer window to shut. Everybody I've told on our private groups on the live stream, I'm saying I am not saying anything until the transfer window shut. Bhai. That is when you have to judge what our season is going to look like. Simple. Stay tuned. Stay tuned. Sub Stay to us. tuned guys. Sub to him. Sub to me. Stay tuned. Plenty. Plenty of सब्सक्राइब that. मुझे क्या मैं तो मेड्रिस्ता हूँ मैं क्या भाई साहब है हुदाए पीएल माँ भाई 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 वाह 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 भाई नहीं यार मतलब भाई मेरे को पक्की पक्की बात है फॉर श्योर मैं आज एक चीज़ करता हूँ कि दोस्तों एक फैंटेसी ला लीगा की फैंटेसी भी है लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस टुमारो बिकॉज इट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट भाई लेट्स वॉच एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स एंड लेट्स टेल पीपल अबाउट क्योंकि सूरज भाई ने पीएल संभाल ही लिया है तो पीएल एफपीएल संभाल ही लिया तो हम भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई क्या है मुझे क्या हाँ भाई पार्टी चाहिए अगर रियल मैड जीती तो रियल मैड जीतेगी भाई क्योंकि रियल के गैलेक्टिको के बाद अब पेस है बारसा के अब बारसा के पास है गैलेक्टिकोस नहीं क्या क्या अब पेस है बारसा के गैलेक्टिकोस अच्छा भाई मतलब टोनी क्रूज भाई कैन यू जितनी आपकी डायरेक्ट बॉल सिंपल होती है उसका Best like Pro Game. Evolution हाँ Soccer, मैं like that he means? टॉनी क्रूज भाई जितनी आपकी डायरेक्ट बॉल सिंपल होती है लॉन्ग बॉल सिंपल होती है उतनी सिंपल भाषा में बताए ये तो भाई थोड़ा सा ड्रिबलिंग होगी भाई तो मतलब समझ नहीं आया बट नेवरदलेस दोस्तों मैं क्या कह रहा था हाँ भाई फ्रैंकफर्ट से जीतेंगे कॉस्टेज इज गोइंग टू यूवेंटस और मेरे ख्याल से 3-4 दिन में उसकी मैं 2-3 एक दिन पहले पढ़ रहा था मैं कि 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी दैट मीन्स ही माइट नॉट प्ले फ्रैंकफर्ट वर्सेस रियल मैड्रिड एंड इफ ही डजंट प्ले भाई तो भाई रियल मैड्रिड हैज़ अ गुड चांस बिकॉज अगर तुम देखो यार फ्रैंकफर्ट अगर बार्सिलोना वाला मैच की बात करो ना तो भाई आप उस मैच में देखो आउट नंबर करने की कोशिश थी बार्सिलोना को हर मिडफील्ड में आप देखो मतलब बार्सिलोना के प्लेयर्स भी एट फॉल्ट थे बहुत ज़्यादा उस दिन आप ओबामेंग की अगर बात करो बार्सा इज मॉडगेजिंग द हाउस टू बाय द फर्नीचर लॉल अरे क्रूज बोल रहे हैं पेश है बारसा के गैलेक्टिको अच्छा पेश Oh no, come on. nah. Oh. RB Leipzig are closing on deal to sign Benjamin Sesko for summer 2003 it could be done this week अच्छा जी भाई और शाल्सबर्ग को वो 20-30 मिलियन का पड़ेगा क्योंकि वो अपना वो है 15-20 मिलियन का सॉरी क्योंकि वो अपना लड़का है उनका आरबी साल्सबर्ग से आरबी लिप्जिग और किसी और टीम को वो 50-60 मिलियन का पड़ेगा क्योंकि समझ रहे हो ना परिवार में परिवार डिस्काउंट फैमिली डिस्काउंट मिल रहा है और बाकियों को फैमिली डिस्काउंट नहीं मिलेगा दैट इज़ अ थिंग दोस्तों अगर आपने स्ट्रीम लाइक नहीं करी तो स्ट्रीम लाइक करते हैं यार थोड़ी देर और करते हैं ये बातचीत और फिर
अपन चलते हैं ऑब्वियसली। आई गेस नितिन भाई को बड़े सारे काम होंगे, और कल कल प्रॉमिस है भाई, कल एक वीडियो आ रही है ऑन ला लीगा फैंटेसी मार्का पे। मैं देखता हूँ क्या सीन है। आई विल डाउनलोड इट एंड फॉर श्योर यू विल हैव अ वीडियो ऑन इट। डेम्बेले स्लीपिंग सेलिब्रेशन विल मेक हिम ले इन हॉस्पिटल बेड एंड स्लीप लाइक दैट। सो अबे यार लॉसू भाई, व्हाट इज दिस ब्रदर, व्हाट इज दिस ब्रदर? Lawson is doing really well in the FPL league even. हाँ भाई, भाई दोस्तों अपने अपने पॉइंट्स बताना जरा एफपीएल के। कौन भाई? भाई यार भाई नेथन ब्रो, हमारे वो जो लीग है कंटेंट डिस्ट्रॉयर, 150 पीपल। भाई मेरा तो दिमाग खराब हो गया। Why? इतने पीपल कैसे, हाउ डिड दे जॉइन भाई? आई वाज सरप्राइज। I I was reading some of the names and I was like, I don't recognize any of these names. I मैं don't तो actually recognize some of the- मैं तो अरे I saw like African names. I saw Ayush. like English people names. I was like, where do these people come from? आयुष भाई लालिगा का प्रेडिक्शन की पूरी बटालियन को बुलाएंगे और वो करेंगे, एंड दैट विल बी ऑन थर्सडे। लालिगा प्रेडिक्शंस ऑन है भाई। लालिगा Battalion? बटालियन द बटालियन, लालिगा बटालियन, इनसेन फुटबॉल टॉक्स, मैड्रिड पंडित्स। Oh, that's what you call yourself? नॉट नहीं, मैड्रिड पंडित्स यार, मैड्रिड पंडित्स। सूर्यांश एंड वेदांत। आई एम नॉट प्रोफेशनल इन एनएफएल, इट्स माय फर्स्ट टाइम, वेल आई हैव 60 पॉइंट्स। 60 points. You're doing That's better than what me. she said. I It's have my first 57 points. But I have, you have 57. Then they talk about me. 58 points. That's only because of Kane, right? Kane nothing. Jesus nothing. भाई मैं तो गैब्रियल जीसस को लगा था, मैंने हालैंड को, आई गॉट 73 पॉइंट्स। ओह क्या बात है भाई, क्या बात। बट दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ कि भाई इससे एक्साइटेड रहना, एंड कीप प्लेइंग, एंड कीप प्लीज़ फॉर गॉड से कीप प्लेइंग, बिकॉज दिस इज़ वॉट वी डू। कि जब अच्छे पॉइंट्स आ रहे होते हैं तो वी कंटिन्यू विद द गेम, एंड जैसे ही कुछ 23-24 पॉइंट आगे किसी वीक तो वी टेंड टू लीव द गेम। डोंट डू दैट, प्लीज़ प्ले एट द एंड, क्योंकि मज़ा आएगा भाई। बहुत अच्छा गेम है भाई। पिछले सीज़न मैंने नहीं खेला था, बट इस सीज़न फॉर श्योर मैं खेल रहा हूँ। और स्ट्रीम लाइक करो दोस्तों, अगर आपने स्ट्रीम लाइक नहीं करी है तो 65 पॉइंट्स भाई, आई गॉट 58। मेरे को लगा था Rex SK Pratap, are you all in our group? Because I can't see your name. SK Pratap bro, are you in our FPL tournament? I'm really excited for La Liga Fantasy भाई। लॉसू भाई क्रेडिट टू यू फॉर दैट वो, क्योंकि मेरे को पता था, मैंने आज ही देखा था कि उसका एक अलग ऐप है, ठीक है, मार्का करके एंड ऑल, बट मेरे को नहीं पता था कि कॉन्सेप्ट इतना फाड़ है कि एक बार एक प्लेयर ले लिया तो ले लिया, उसके बाद आप नहीं ले सकते दूसरा प्लेयर। तो मतलब यार ऑब्वियसली मैं तो थोड़े वो प्लेयर्स थोड़े से पिछले सीजन के स्टैट्स खोलने पड़ेंगे बाकी टीम्स के भी। आरडीटी ले सकते हैं हम, कम ऑन, इट्स अ गुड शाउट आरडीटी। राहुल डी टॉमस, ला फैब्रिका टीम बनाऊंगा मैं, टीम का नाम है मेरा ला फैब्रिका, कम ऑन, ये कर सकता हूँ मैं। लेट्स डू दिस, लेट्स बाय मिगुएल गुटेरेस को लूंगा, पैंदी अक, हाँ मिगुएल गुटेरेस जिरोना गया, दैट इज फॉर। आई विल हैव मिगुएल गुटेरेस, आई विल हैव Raul D. Thomas. Nabil Fekir was a Fabrica player? Sorry? Nabil Fekir? फकीर का तो नहीं पता, बट परेहो यस। No, because I saw last week right Parejo and Fekir. क्रूज कंट्रोल टीम नेम भाई मेरा तो होगा वो भाई। मेरे को पता चला भाई नेग्रेडो वाज अ ला फैब्रिका प्रोडक्ट। मेरे को सबसे शॉकिंग युआन फ्रान ही लगा सबसे ज़्यादा, बस बिकॉज ही इज़ प्लेइंग इन एथलेटिको मैड्रिड दीज डेज। तो आई वाज लाइक कि भाई युआन फ्रान, यू ब्लडी दैट। भाई बहुत सही प्लेयर्स खेले भाई, उससे मज़ा आने वाला है, मज़ा। Okay, got you. ऑस्कर रोड्रिगेज भी है, ऑस्कर रोड्रिगेज इज ऑल्सो ला फैब्रिका प्रोडक्ट। तो मतलब अगर आप देखी जाए तो एक ला फैब्रिका प्रोडक्ट से टीम तो बनाई जा सकती है, बट देखता हूँ मैं। Sergio Asenjo, the goalkeeper. Sergio It was La Fabrica. जी हाँ। Rex, are you in a fantasy Premier League? I found Rex and भाई SK Pratap bro, are you SK Pratap goes by another name. I'll tell you privately. So I'm assuming he doesn't want his name public. So Vinay Katori, choose from Kedis. Yes, I was about to say that name भाई। मैं उसको लूँगा, चूस को लूँगा। Never heard of that. Who's that? He's our defender, अभी इस सीजन ही गया है। चूस्ट है। देन वी हैव गुटेरेस, देन वो 5 मिलियन का राय वेलेकाने से हम किसको ला रहे थे? कम ऑन गाइस, क्या नाम है उस बंदे का, टिंगू का? Which name? राय वेलेकाने से 5 मिलियन का बायबैक क्लॉज है।
क्या नाम है टिंगू 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 क्या टिंगू? हाँ भाई टिंगू छोटू सा है वो अगर रेगुलियन आ गया तो रेगुलियन को भी ले लूंगा मैं आई होप से वी साइंस हिम फरहान फरहान गार्सिया विल बी इन माय टीम So what is happened to Reguilon? He's gone back to where now? ही इज इन टॉटनहैम No, he's been sold to Tottenham. I thought it was the loan deal. नहीं टॉटनहैम विद वही वाला वो वाला सीन समझ रहे हो क्लॉज भी रख सकते हैं फैंटेसी क्लॉज भी रख सकते हैं फैंटेसी में भाई तो भाई कुछ तूने तो नेक्स्ट लेवल गेम बता दिया भाई ये तो काफी ज्यादा फन लग रहा है सी Now, Lostry, tell me, in the fantasy game, are there any levers we can pull? मैंने कुछ नहीं कहा भाई मैंने कुछ नहीं कहा No, क्या पता I इतना actually- रियलिस्टिक बना दियो डू लाइक द स्ट्रीम यार funny. एंड विनायक ब्रो वेलकम टू द स्ट्रीम भाई वेलकम टू द स्ट्रीम आई एम सीइंग यू द फर्स्ट टाइम सो थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग ब्रदर मींस अ लॉट Cool. So SK Shashank, I thought he didn't want his name, so he just clarified. Yeah. So Rex is not in FPL because he's not responded. 73 pretty good, but बड़े अच्छे our top guys, for anyone who wants to know who is the most successful right now. 96 points by, I won't say his name because again I don't want to. Luffy the Monkey, लफी द 11. 96 points, and this week's leader was 119 points. So he's actually done really well this नो week. आई एम रेक्स भाई Really? जॉइन आवर लीग भाई QAC5RM दैट इज द लीग कोड Curious. क्या बात है मैं लिख देता हूँ भाई QAC इफ यू वुड लाइक टू प्लीज ज्वाइन द लीग काफ़ी लोग हैं काफ़ी मतलब भीड़ ही है डियोंग एंड रेबियोट इज गुड नॉट रेबियोट ओनली हाँ भाई मे बी लेट्स सी दोस्तों इसी के Yeah, साथ Faker, FF, exactly. I think that is hopefully the plan. Let's see what happens. दोस्तों इसी के साथ मैं शशांक ना ब्रो डिडंट वांट टू राइट माय फुल नेम शशांक प्रताप चौहान SK शॉर्ट फॉर्म ऑफ शशांक हाँ भाई चलो यार शशांक ब्रो रेक्स ब्रदर फेकर FF व्हाट इज अप ब्रदर सी थैंक यू वेरी मच यार तू स्टार्टिंग में था एंड सॉरी अगर तेरे को किसी ने वो कर दिया था म्यूट तो मेरे को थोड़ी उनसे बात करनी पड़ेगी SN जो I'm not professional in FPL it's my first time Lawsu bro thank you very much and Fanphilic brother it's always a pleasure to have you Ayush Bajpai bro Tony Cruz please call Luka Modric and Casemiro and the team next time as well to the chat and दोस्तों मिलते हैं दोस्तों 2 days to go for the Frankfurt versus Real Madrid see you Ala Madrid in Alamas दोस्तों see you have a nice day be happy keep